वेलकम वेलकम गाइस। हेलो हाइपर सर। वाह जी सर भाई, ठीक है भाई। हेलो हाइपर, हाउ आर यू? आई एम गुड टच पैट। व्हाट अबाउट यू? कैसे हो ब्रो? जिंदा। आई एम गुड। नॉइस, वेरी वेरी नॉइस। मैं भी जिंदा हूँ। नाइस की बात। अब तो आरसी है मुझको ऐसे। ओके, मुझ में कहीं बाकी तो मैं बन के तू चली आता। तुमसे किसने पूछा तुषार? लेकिन पता नहीं कब तक हूँ, तो किसी को भी नहीं पता। तुम्हें क्या है जी? ये तो दुनिया के हर इंसान को नहीं पता कब तक है वो। ये भी ठीक है, बराबर। हर भाई ने मन में पूछ लिया था, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। बराबर, एकदम बराबर। ओके, ये भी ठीक है। तो मुझ में कहीं बाकी। बहुत गंदी आवाज है, क्यों ही गा रहा हूँ मैं? तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब है। ऐसा कुछ तो है। बन हाय भाई, इंडियन आइडल में नहीं गए? इतनी गंदी आवाज पहली फुर्सत में निकाल देंगे मेरे को। अरे हैकर कहाँ है? हैकर को बुलाओ। हैकर ने जो मेरे को गाने सुनाए हैं ना, गानों से विश्वास उठ जाएगा मेरे को। किसने का गंदी आवाज है? वहां तो नया कुकुर रोने लग जाएगी। अच्छी तो आवाज, अच्छी कद्दू मेरा, अच्छी आवाज। इससे अच्छी आवाज कहते हैं तो भाई, मेरी फ्रेंड जो गाती है, मेरी सिस्टर, भाई उसे क्या ही बोलेंगे। मैं नहीं जानती कहाँ है मेरी। बात नहीं होती हैकर से। भाई उसके जो उसने जो गाने सुनाए ना मेरे को, लिटरली उन्हें अगर सुन लिए तो क्या क्या निकलेगा मुंह से पता नहीं। अरे वो सीटी कहाँ गई? अच्छा, आप बाथरूम सिंगर ओनली? वाह नहीं, मेरी आवाज नहीं सुनी हाइपर ने। आपसे भी गंदा है। अरे मेरी आवाज बहुत भारी है भाई। अरे यार, तुम्हें एक मस्त जगह दिखानी थी, कल तुम्हें स्ट्रीम से चले गए थे ना, के बाद मैंने देखी थी वो जगह, मेरे को याद नहीं आ रही किधर थी। अच्छा, इधर है, लॉल। ये है भाई। ये इतनी डरावनी जगह ना, इतना बुरा गाता है वो। एक होती है आवाज गंदी, ठीक है, एक होता है सुर नहीं लगाना। अभी मुझे पता नहीं, पर तुम्हें कैसा लगेगा आई डोंट नो। अरे तो क्या Avoid the trees. Follow me. हैरेंट सी जगह है, देखना जरा। ओए लैग। Call me. इतना लैग क्यों हो रहा है? तुषार को रेना दिखाई थी न? अरे रेना चेंज कर दिया ना उन्होंने ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग मेरा नेट गया? नहीं नहीं, मेरा अबे नेट नहीं गया भाई। मेरा लैग हो गया था, ओबीएस।
सस्ता पीसी है ब्रो, ऐसी बात। भाई आ जाओ हाइपर भाई, साथ में गाली देकर आते हैं उसको। क्या क्या है ये जगह भाई, कितनी डरावनी जगह हो सकती है वो, ये है देखना जरा। साला बंदा अकेले घूमने में फट जाए भाई उसकी, वहां से देखा था मैंने। भाई ये क्यों घूम रहे हैं? और रोमांटिक, अबे साले रोमांटिक प्लेस है, देखियो। मैंने 2 दिन स्ट्रीम मिस कर दी थी जेनशिन की। हाँ वो बताया था। इसे कहते हैं इनुजुमा, इनाजुमा, जो भी वट एवर, वो सिटी, इनाजुमा सिटी। पर भाई ये क्या है, ये भैंस घासों का कलर देख लो जरा। क्या अरे मेरा थंबनेल बढ़िया। चल, इसी पर आज दोपहर में क्या कर रहे हो हाइपर, आपने अपने को मस्ती की छुट्टी पी रखी है क्या? नीली घास, घास नीली नहीं है, घास तो हरी है, पर वो इस जगह का कलर ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज। Catch the wind. भागो बेंच। अरे व्यूज आते वो थंबनेल से, जरूरत ही नहीं है। सामी बोलो था ना, अच्छी अबे ये अच्छी जगह है भाई। कल रात को कोई नहीं था स्ट्रीम पे, ठीक है, मैं अकेले आ गया यहाँ पर एक्सप्लोर करने। भाई जो मेरी फटी है भैंस की आँख, भाई कैसी सी जगह है ये। हेलो सर, हेलो टाई भाई। अबे ये क्या है, ये कैसी जगह तुमने बना रखी है दुनिया पे? अबे साला देख के डर जाए इंसान। देखो नीचे, हाँ उससे पूरा सिंगल प्लेयर पे अनलॉक करना होगा, तो वो तो कर लेगा मैं, बट इतनी डरावनी जगह बनानी क्यों थी ब्रो, मुझे ये बताओ यार। डर लग रहा है भाई, इधर उधर जानने में फट, समझ रहे हो? अबे भाई डर के पीछे मत आ, मैं बिजली की आवाज, एनिमी। आज भी 144p पर चल रही, पर छी गंदा ग्राफिक ब्लर दिख रहा है मोबाइल डेटा पर। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आऊं, इतना डर लग रहा। अबे हाँ आजा। ये क्या है? मतलब उसके पैर में घुस गए हैं।
भाग। ये क्वेस्ट से अनलॉक होगा। वीसी वीसी, आजा वीसी आजा। आवाज बढ़ा के यो। आवाज ही नहीं आती तेरी। ये देख ले। बारिश से बंदी नहीं होती भाई यहाँ। ऐसे बारिश तो हो ही नहीं रही है, बिजली कड़क रही है भाई। ये देख। क्या रुक जा, मेरे को वीसी वो करने दे। गाइस लाइक करो। मुझे लगता था विंक लाइव नहीं करती, लेकिन आज पता चल करती है। लेकिन मैंने बेल आइकन नहीं ऑन। अरे वो 2-3 दिन स्ट्रीम करती है, फिर उसको वो हो जाता है, फिर वो 1-2 दिन का ब्रेक लेती है, फिर स्ट्रीम करती है, ऐसा करती है वो। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रहा है मेरा? ज्यादा रुक, कम करने दे। And हेलो 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 हेलो। अभी ठीक है। क्या जगह है ये? साला यहाँ पर कोई आ भी कैसे सकता है क्वेस्ट? अरे बहुत लेवल आ गया वाला। अबे ये जगह इतनी डरावनी सी। साला कल मैं अकेले आया था, रात को फट गया मेरा इंजन। मैं ज्यादा घूमा ही नहीं भाई। दो तीन वो थे, वो करके और निकल गया सीधा। इससे भी बेल आइकन कौन करता है? मैं तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दूंगा। लग रहा है। टैग। ये ले लो, ऊपर स्टार पर है। अरे चढ़ ही नहीं रहा। सबसे भाई ऊपर यहाँ अच्छा लग रहा है बे थोड़ा। तो वहां पे अंधेरी सी जगह, ऊपर से पूरा पर्पल पर्पल दिख रहा है। तो ये स्टार ले लो। इधर है स्टार। तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। क्या मतलब यहाँ से मैं चढ़ आ नहीं? जरा मैं बंदोबस्त करता हूँ। रुको रुको जरा। इसका मैंने ट्राई तो करते हैं। आ जाओ। जा ही नहीं रहा ना। ये डिवाइस इसलिए बनाया था क्या? अच्छा ये क्या बदतमीजी है? तेरे को कहीं पे भी हवा बना सकता है तू। हाँ, डिवाइस है मेरे ये भेदभाव क्यों? एसगार्ड। हाँ एसगार्ड सुंदर था, ये साले सुंदर तो कतई नहीं है। इधर कहीं दिखा रहा है एक स्टार, किधर है? जमीन के अंदर? कितने स्टार हैं? चल चल 680 स्टार है मेरा दिमाग में। लेवल 10 करने के 180 है। अरे ये तो वो वाला पेड़ है, कौन क्या कहते हैं इसे? चेरी ब्लॉसम। साकुरा ब्लॉसम। ब्लॉसम ब्लॉसम। गेम पे इसको साकुरा ब्लॉसम पे। ये अलग नाम है लॉली। इधर आ जाओ, इधर है एक स्टार। ये रहा। जॉनी ऊपर ऊपर। पेड़ के ऊपर। हाँ जॉनी को मैंने हैप्पी बर्थडे बोला, लगता है बिजी होगा, रिप्लाई नहीं दिया। बराबर। बलून पकड़। ओह
क्या दिख रहा है बे? यहाँ पर एक और रहता है। हाँ, मैंने भी इंस्टा पर बर्थडे विश किया, बोला थैंक यू है। इधर क्या आ मतलब नीचे तुषार तुषार। को दे दिया मेरे और मेरे को नहीं दिया? ओए बिल्ली अरे कितनी सारी बिल्ली भाई, 4-5 बिल्ली हैं यहाँ पर, जल्दी आओ। है किधर? नीचे? 1 2 3 4 5 6 नीचे 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 मैं जहाँ पर हूँ। जल्दी आओ, भाग जाएंगे। ओ बिल्ली की फौज आई। ऐसे बिल्ली है भाई, इतनी डर क्यों नहीं है? देख रहे हो भाग गाइस? जाएंगे I तो। will have order. अजी भाग कद्दू जाएंगे मेरा। तो भाई। बिल्ली है अबे, चूहा थोड़ी है। बिल्ली तो अबे साले। भाई मेच्योर गिरा दिया इनको ऊपर, देख वही लो, तो डरते हैं हालत देख लो इनकी। वो एक ही में समा गई दो बिल्ली। हाँ। ये देख ये देख ये देख, इधर देख, ये क्या हो रहा है? मैं नहीं गिर रहा। ओ भाई असली है ये बिल्ली। भाई क्या था ये? पॉपुलेशन बढ़ा गया है। ओए जब पौधे ने जमाया। आपने किया है ना। अरे कल मैं बस आया था और वो बस बिल्ली को अपना काम करने दो, बराबर कल्टी मार रहा अरे है। ये जगह है ना, आधा जगह है ना क्वेश्चन अनलॉक होगा, मालूम है? ऐसे अनलॉक नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा यहाँ पर है। मैंने तो बस वो जो जो मेन मेन वो दिखा था वो अनलॉक करा है। हाँ, वो वाले स्टैचू ऑफ जगह के लिए सेवन। आपको क्वेस्ट करना पड़ेगा। आजा तो पानी में डूबा हुआ है पूरा। ये वाला कैसे होगा? इधर कैसे जाए? बोट से जाना पड़ेगा। हाँ, कौन सा है पानी पे? क्या मतलब बिल्ली की भी फीलिंग्स होती? अबे तो मैंने कब मना करा? मैकेनिक व्हीकल तुम, व्हाट द फक, ये कहाँ से कर दिया तुमने? इधर आ जाओ ना। यार तू मेरे पास ही तो है स्टैचू ऑफ मैं सेवन। भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सच्चे में सच। मैं मैप खोल के बैठा था ना। हेलो परन मोइन, हेलो ब्लास्ट मैन भाई। उसका सही है कभी भी चालू। अबे बदतमीजी नहीं। गलत चरण, गलत जगह आ गए थे हम, गलत ये हो गए झुंड में। ये क्या है बे? कुछ तो इलेक्ट्रो चैनल के विलेक्ट्रो। अंदर जाने के लिए भी क्वेश्चन करना पड़ेगा Let me try my blade. फाइट हो गई। आ रहा आ रहा। बहुत मारेंगे बहन के लोड़े। That won't work. मैं तो चढ़ ही नहीं पा रहा। अच्छा This will end you. Fall before me. Freeze. This isn't over. अजी कद्दू ही ने मार पाऊंगा क्या? 46 लेवल क्या है ये? You win. This. एक तो This cut down. Like this. भाई अचानक से प्रकट हो गए बे। आजा आजा। इधर जाना है ऊपर। ये क्या है? क्या क्या? ओए अरे वो मार दिया भैंस। किधर गया? इसकी यहाँ पर ये क्या था बे? ये ऐसा ही है, जैसे मेरा नेट स्लो हो गया था इसलिए मशीन में दिखा। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कार किधर है? ये है क्या? नहीं नहीं, वो स्टार नहीं ले पाओगे, वो जगह जाओगे ना, देखो नहीं जाओगे। अच्छा उस
उसके लिए भी क्वेश्चन करना पड़ता है। क्या था वो, उसका नाम क्या था? अच्छी। ओहो। साला सुअर। पर साले शैली, ओए ये कलर की शैली तो अभी बहुत दिनों बाद दिखी मेरे को। ये रहा एक। अंडरग्राउंड माइल्स का शैली तो बहुत अच्छा होता है। एक मिनट, इसको मैं लेके कैसे जाऊंगा? किधर जाएगी? अच्छा, इधर जा रही है, ओके। साइड पे जाओ। बच गया बारह। वो सामने देख ले, इनकी बहन का। तुम लोग क्या कर रहे हो बे यहाँ? इस साइड से आ जाओ और इस साइड से आ जाओ। यहाँ पर अरे शैली ले जा रही है मेरे को, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। डैमेज पड़ेगा आपको, जैसे डैमेज कर रहा है। अरे वो आ गया मेरा टेस्ट। Smell of treasure. Strange. तेरे पे नीचे से गया क्या तू? भाई ये तो वन शॉट से करता है। फ्लिंट फॉक्स वीसी देखो, वीसी में तो देखो मैं भी हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, वीसी में हो तो अभी कैसे देखूं? अच्छा वॉइस चैनल पे, ओके। एक मिनट, फ्लिंट फॉक्स तुम कैसे वॉइस चैनल ये वाले ज्वाइन? पेड़ बहुत खतरनाक है देखते हैं। अच्छा ज्वाइन कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो। गॉट इट। नीचे टेलीपोर्ट पॉइंट का क्या हुआ अचानक? आ जाओ। टेलीपोर्ट पॉइंट तो टेलीपोर्ट पॉइंट। एमपी सीनियर अच्छा काम कर रहा है ना? एक तो सो गया यहाँ पे कराटे मार के। जाना है। ऊपर से ऊपर एकदम। वो क्या है? मेरे को तो गंदा वाला लग रहा है। डैमेज पड़ रहा है। आ जाओ, आ जाओ। ए, ये देखो साला मार हाथ दे। टूटता है। गरम है तेरे को। साले यहाँ फटी में तू आग सेक रहा है। ये यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक और है, वो देखो। भाग जाओ, ये बैंड किधर आवे? भाग जाओ। टेलीपोर्ट मार देता है। हाँ भाग गया। ये रहा। ओए सामने वो उस पे जाना है, देख वो, देख पूरा स्टैचू ऑफ इसको सेवन। इसको करो, इसको इसको इसको। अभी कहाँ से? उधर जाना है, वो देख पूरा स्टैचू ऑफ सेवन एक। जंप करके मत ही हो, ठीक है? धीरे धीरे। इतना स्टैमिना ही नहीं है मेरा। इसलिए तो बोला। गाइस लाइक करो। यहाँ पर एक बंदा कर रहा है। ओए ये क्या हो रहा है? Frostbite. अच्छा, Cooked food. Disgusting. These things useful? अरे यार दो है जो। पर क्या है? इसको इसका की है फ्रेंड। पहली क्या कर रही है? इसका की है क्या? किया है ना यार। What's the hurry? क्या करना है? की चाबी चाबी। अच्छा की थोड़ी है कि क्या ऑन करना है? अच्छा, इसका ऑप्शन ही नहीं What's the hurry? है। नहीं है।
दो जेली को एक साथ लेके जाऊंगा। करते हैं क्या? आ जाओ अभी इसको लेके चलो दोनों को एक साथ। तेरी कहाँ है? इधर भी एक है। ये अलग जाएगी, वो अलग जाएगी। इधर आओ ना। ये देखो वो उधर ही जाएगी। आप देखो अभी इधर से आओ। इसको तो किसी की मैयत पे ले आई। कहाँ लगेगा देखा, इसीलिए बोला दोनों एक ही जगह जाएंगे, इसीलिए बोला दोनों आ जाओ। ये तो किसी की वो लग रही है, कब्र। आना। वाह, पीछे से चलो ना। ये भी अलग ही नखरे हैं। The insolent shall be punished. Winter shall eventually come. Dodge this! I will have order. Solidify. हाँ कस। Smell of treasure. Strange. अचानक से प्रकट हो गए बे मुंह के सामने। फाक। जॉनी की स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, बर्थडे वाली। जाके आता हूँ वरना मेरे बिना केक नहीं काटेगा। ठीक है, उड़ी मारता है क्या? ये वाले चेस्ट को कैसे खोलते मैं आज तक नहीं जाना, मालूम है? चैट में लॉन्डो को ऊपर गया है क्या? हाँ हाँ अच्छा। वो रहा। चैट में बोलो ब्लास्ट भाई को बताएगा। कौन सा क्या है? चेस्ट? मैंने भी नहीं ओपन आज तक नहीं। रुक जा अच्छा। पहले अभी दूर जाओगे पिक्चर सही हो जाएगा। दूर आ जा। ठीक है तो। ये देखो हेलो सर आयुष भाई, हेलो। कैसे ओपन करना है ब्लास्टमैन भाई इसको? इसके एनिमीज होंगे ना नीचे। देख नीचे कुछ तो है, गेट वेट ऐसा। हेलो आयुष भाई, क्या हाल चाल? लॉन्ग टाइम नो सी। वो क्या? ओए यार, डोमेन भी है कोई नीचे, ओपन करना है क्या उसे? करना बट उसके लिए कुछ छोटा कैरेक्टर चाहिए। सायु लो। चाहे दूसरी पार्टी में ले लेंगे। हाँ, तो है लो कहाँ? ना। नीचे है क्या? कितने ग्लिच होता है, ग्लिच से जाना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट करना पड़ेगा पूरा। ग्लिच चेक ग्लिच से करवा दे रहा हूँ। वो आगे क्या है? टेलीपोर्टर है क्या वो? व्यू पॉइंट है वो तो। मैंने एकदम नीचे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इधर से जाना है। जैसे छोटा सा जगह होता है जहाँ पर से छोटे छोटे कैरेक्टर कर दिया होगा ना। मैं भी ऐसे किया था, फिर बाद में जाके सोचा बग्स से फिक्स कर देते हैं। ये देखिए बहन का बहन की। Freeze! Don't get frostbite. अब आओ, पास आओ, आओ आओ बहन के लोग, पास आओ। आना। तो मम्मी आ जाएगी। Cool it. करते हैं क्या? बहन के थोड़े जान। Dodge this. इतने वाली जगह पे बेच देते। Freeze. Picked the wrong test subject. रॉन्ग टैग सब्जेक्ट बोल। Empty chest. Good for साले टेस्टिंग storage. के लिए है क्या हम यहाँ?
वो बोट खड़ी है सामने। का ये रनिंग रनिंग का। अरे ये कहाँ से आके बोल रही है? बच जाओ। तायू लो। कैसे मच मेरी तो छोटा कैरेक्टर सेट से आपके पास तायू ही है। तायू से घुस जाएगा ये? अच्छा हाँ घुस जाएगा रोल करके। वो नहीं करना है। ये देखो। और रोने रुक जा। तायू प्यारी तो है। हेलो। हाँ एक मेन कैरेक्टर तो लेना। ये देखो। पूरा यहाँ पर आके लाइन को रुको ना मैं तो बता दूँगा आगे। अटक गया। यहाँ पर आके तो कोई क्लाइम करेगा फिर कैरेक्टर स्विच कर लेना। अरे देखो ना। नहीं जा रहा अंदर। अरे मैं ऐसे गया था। सीधा यहाँ से ऐसे लेके जाना। उन्ना मैटीना मीसानो अलाजातो कालो भाई बेला चाओ बेला चाओ। हट मेरे को ऐसे जाने दे हटियो। ये क्या ले लिया? नहीं जा रहा। Rise. अरे क्लाइंट के पोजीशन पे आता है। क्लाइंट के पोजीशन पे आके कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर चेंज करो देखो जाएगा। नहीं कैरेक्टर चेंज करना है बड़ा वाला नहीं हो कैरेक्टर। कैनन स्विच। मैं तो फंस गया। Orders given. Orders received. 12 हो गया हो गया जाओ 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 आगे जाओ। हो गया हो रे। गया। देखा बोला कि नहीं। गॉड रे। पर लेवल 30 ये क्या बदतमीजी है? अगर बाहर आना है तो कैसे आएंगे फिर? टेलीपोर्ट कर लो। नहीं अच्छा अंदर आने के लिए ऐसे आना पड़ेगा कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं इस बार तो सीधा टेलीपोर्ट करके कहाँ जाओगे? भाई पहली बार में जो बंदा करेगा जिसको नहीं पता वो कैसे जाएगा अंदर? वो उसके लिए क्वेश्चन करना पड़ता है। बहुत लंबा क्वेश्चन लोल। अरे ऊपर चढ़ जाए स्टार है ऊपर। मेरे को भी मेरे दोस्त ने सिखाया। यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लो दूसरा प्लेस अनलॉक करना है। गेम वाले भी लाइक सालो शॉर्टकट चूज करते हो। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी सारी खाली तिजोरियां। ठीक है चार भाई भी लाइक में तो गाना का ओ देखो लाल लाल गॉड पे एक्टिव करना है। वही तो बोल Come रहा on, था। let's get moving. We're not frozen in place after all. तो मैं जितने टेस्ट करेंगे तभी खाएंगे ठीक है। आज लूट ही लूट करेंगे। अरे जियोन भाई हेलो वेलकम। करते हैं क्या? ये देखो Where are you? मीमोरी हेलो This body belongs Wait. to ice.
एकदम। रुक जा, मेरे को अपना रेजर लेने दे भाई, मेरा मेन कैरेक्टर है। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं रेजर को अपग्रेड करने में। अच्छा बोलता है परमिशन नहीं है वीसी पे बात करने की। हाँ ब्रो, नॉर्मल उनको परमिशन होगी तो भाई हमारे गेम के बीच में आके बकचोदी कर देंगे ना। जनरल ज्वाइन कर सकते हो What's the आप। hurry? मैं डिस्कॉर्ड पे था। हाउ आर यू गोइंग ब्रो? नाइस, इट्स वेरी नाइस। Fascinating. थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, यहाँ पे बारिश हुई है, मजा आ रहा है, हल्की सी बारिश हुई। ओ, ये क्या ड्रैगन फ्लावर? डेंड्रो कुछ तो था वो सामने ही था। सामने वाले इनको तो वन शॉट मारना Finally, I... चाहिए। No. Freeze! Fuse is lit! Very... नाइस, जस्ट लैग। चेस्ट भी तो ऐसे कोपचे में छुपा रखा है कि कोई Empty चीज chest. उठा ना ले। Good for storage. वो रहा वो क्या है यार, बोट के ऊपर चढ़ा रखा है। अरे फक, चढ़ा ही नहीं। यहाँ पर एक और चार टेस्ट पूछेगा। अबे चढ़ नहीं रहा। ध्यान कर रहा जंप, डबल जंप करो, डबल जंप करते रहो, फिरते रहो, ऐसे होगे तो गिर जाएगा। दैट्स द राइट नंबर लॉल। ये तो चमन चूती है वही वाले। अरे वो Cool it! नहीं चला How fortunate. That's the right number। यहाँ पर एक ये क्या है सामने? रेडी है इधर है। What's the hurry? बाजू पे उसके पॉइंट कर लेना। जल्दी चलो। चल। पहले इस कॉर्नर कर लेना। ये दूसरी जगह जा रही है। मिनोमीज है। वो रामा पर दुश्मन गुरुरु। अबे यहाँ दो चाहिए, एक और कहाँ है? वो देख पानी से भग, हाँ पानी से भगता हुआ। समझता कैसे? Cut down like this. देखो एक है वहाँ पे। हाँ हाँ तो वो शिप पे है, मैं भूल गया था। दो नहीं तीन चाहिए शायद से। आजा व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट का क्या करना है? ओह, सब लोग अच्छे अचीवमेंट कंप्लीट है। ये सेव भी What's होता the है क्या hurry? व्यू पॉइंट अपने आप? अरे अटक गया वो। What's the hurry? यहाँ पर से एक पेड़ होता है, पेड़ से चलना होता है, पेड़ कहाँ चलेगा? फिर काट दिया। मेरा नेट मर गया लॉल। यहाँ पर है, यहाँ पर है। पेड़ नहीं है, डंडा है। यहाँ पर है। आ रहे हैं। और है इसके ऊपर, देखा?
ये दुख दर्द spent 24 hours. I need more hours with you to spend the weekend getting even. और कोई जगह नहीं मिली चढ़ने की। और यहाँ पर एक कैसे ये लोग इधर है तो मेरे को क्यों नहीं दिख रहा फिर? ये जो सेम कलर का छुपा रखा है। Smell of treasure. Strange. मैं बोला था ना 3 चाहिए तो तीसरा नंबर कहाँ है ब्लास्ट भाई तो तीसरा नंबर ब्लास्ट भाई है ही नहीं चैट में शायद। हेलो ब्लास्ट भाई हो क्या? इधर कहीं होगा तीसरा। लाया उधर से दूसरा लाया इधर से तीसरा होगा इधर ही हो। गाइस लाइक ओ बैंड के कोई है चैट पर पता नहीं। अरे ये पेड़ पौधे बहन के लोड़े क्यों आते? वायरस डायरी ये क्या खुल गया? अबे डायरी मुझे लगा उठानी। ब्लास्टमैन भाई हो क्या? अबे इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रो से मारो ठीक है भाई। तेरा अलग गांजा है उसको और हील मिल जाएगा इलेक्ट्रो से। है क्या उधर? वो वाला जगह तो चेक कर लिया वहाँ पर कुछ आए हैं। अरे यहाँ से थोड़ी आए हैं हम उधर से आए हैं। हाँ उधर से आए हैं हम। इधर से थोड़ी आए ब्रो। हाँ हैं? आप जहाँ इधर पर से वहाँ इस तरफ से आए हैं। और ड्यूड अरे उस तरफ से है ना हम। हाँ तो शैली नहीं दिखाई दे रही। स्टार दिख रहा है मेरे को एक बस। ए मैं इसको ले नहीं पा रहा व्हाट द फक। भाई शैली खो गई। वो कोई क्या उड़ रहा है? वो बादल है। अरे इसको छोड़ आगे वाले उस पर चल। टेलीपोर्ट पॉइंट तू आगे भाग गया ठीक है भाई। मैं यहाँ शैली ढूंढ रहा हूँ तू आगे भाग गया। मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ। शैली बहन की ये क्या है पारिस What's the hurry? जा रही इससे क्या करूँ मेरे को सही दो। अबे तू इतना आगे कैसे चला गया? अभी तो मेरे से मिल गया चलो मिल गया। पूरी बहन की इसके ऊपर ही है साला। तो मैं बोलूँ मेरे को सबसे ज्यादा याद क्यों नहीं है क्योंकि दोनों सबसे ही था। चल भी चल ओए चल। क्या भाई किधर गई? साबुन स्लो है इसका। अरे कुछ है How fortunate. कोई इनाज़ुमा नहीं है। वो वाला टेलीपोर्ट ऑन करना है। What's the hurry?
स्टैचू ऑफ 7 ऑन करना है। ये क्या बवासीर है सुन मुझे। बहुत बस ये फ्लावर उठा रहा हूँ मैं जो कैरेक्टर अपग्रेड करने में काम आते हैं, बाद में मिलते ही नहीं साले। अरे खाना बनाने के तो काम आ जाएगा। What's the hurry? अरे कभी तो मिल ही जाएगा। वो सामने देख ले बहन। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया बहन? कॉल चल रही है यहाँ पर तो एक्टर तो बात है। Let's अबे get down मौसम to भी चेंज हो गया यार तो आज। ferry. Finally, to the ferry. अरे यार बहन जी। बहुत लंबा गोए, बहुत दिमाग सर के ऊपर गिर जाएगी। वाह, इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या देते हैं? वीड। वीड ये देख बहन चोद। Dodge. Let's get down Time to for a light show. finally. To the ferry. Finally. No. क्या मेरा? अबे भाई, ओ भाई, ये क्या है? ऊपर जाना है। अरे चढ़ जा। तो यहाँ से तो चढ़ ही नहीं। अच्छा चढ़ गया। यहाँ पर इसके खान को इतने सारे बंदे मारे थे, इतना वाला क्या गार्ड बनेगा रे तू? ये देख ले मेरे कैरेक्टर को, देख ले अलग चूतिया हो। ये वाला जल्दी कर दे। बस सामने से फूफा बैठे हुए हैं भाई। क्या मस्त लग रहा है बे, क्या मस्त लग रहा है, गीला गीला सब कुछ। ये कैसे करने का? ओए करंट लगा। हाँ वो, अरे बिजली कड़क रहा है ना, तो पड़ेगा ही तो। अबे ही डैमेज हो रहा है। चल निकल यहाँ से बहन की। मुझे लगा रेजर तो इलेक्ट्रो है, इसको तो लगेगा नहीं। अरे ऐसे कर, यहाँ पर इसको टच करो। आ जाएगा पर इसका सीक्वेंस होगा ना कुछ। वो दिखा दे यहाँ पर है, ये दिखाएगा। इधर आ। क्या? वाह वाह बहन का लड़ा इतनी जल्दी भाग के क्या हो? अरे टच मत करो सीधी तरह। इधर आओ, इधर आओ। अरे ये वाला था, ऐसे था ये। क्या कर रहा है? ये वो भाई मैं नहीं कर रहा, छोड़ रहने दे, इग्नोर करते हैं इसे ना। बिजली लग रही है, यहाँ पर भी करंट लग रहा है। What's the hurry? नहीं चाहिए मैं लग्जरियस की माँ का भरोसा। अलग गुंड मार रहा हो। ताला एक तो इतनी जल्दी दिखाता है, घंटा एक तो पेड़ों के बीच में दिख भी नहीं रहा किधर किधर जा रहा है। वाह You win. This. ये देख मैंने क्या वो मारा, गलती से वहां पर जंप कर दिया, सीधा नीचे आया मैं। नीचे गिर गया, डैमेज करेगा जो आपको। नहीं मैंने यहाँ पर आके मैं सोचा ये जगह है, ये मारूंगा, फायर कर दिया। How ये fortunate. क्या चीज है बे? ये बहन जी यहाँ पे सब बिजली वाला क्यों है सामान? ऊपर चढ़ना है क्या? इलेक्ट्रो आर्क होने नहीं है।
साला यहाँ पर चोरी करते हैं लोग। I will have order. Finally, अरे करंट लगेगा। नहीं लगता, ठीक है ना, मेरे को बैक करना है। आपको भी लिंक करना पड़ेगा। हाँ हाँ पता है। ओ भाई तो पता ही नहीं तो हो जा भाई, लोडिंग ही नहीं खत्म हो। तो नोटिफिकेशन चेक करो जो क्या मुस्लिम की मुस्लिम मूवमेंट नोटिफिकेशन दे रहे सारे आ जाएगा। एक बाद में आएगा हाइपर इमोशनल लाइंस हाइपर बहुत गाना बढ़िया। मारा क्लच तो वाह बंदे ने बोला ओ माय भाई, टेलीपोर्ट आ गया, अब सब ऑन करना पड़ेगा। हाँ क्या वो मतलब, इसके बाहर भी एक ये है। अब यहाँ तक कैसे जाने का? बोट लेके? हाँ वो चले जाएंगे। अरे वो चिंता मत करो, पहले जितना है उतने पे प्रोग्रेस करते हैं। कब ऑन करेंगे बैंक? कब खोलेंगे? आप सबसे पहले वो वाले जगह पे कैसे गए, मेरे को ये पता नहीं चला। कौन सी? लोग एंड में जाते वहां पर जहां पर आप सबसे पहले गए, जहां पर आपको डर लग रहा था। पता नहीं, घूमते हुए चला गया। भूल होगा। कौन सी जगह बोल रहे तो? ओ यहाँ पर एक बॉस भी है मालूम है वो। अच्छा, ये साहिल यहाँ को पर हाँ वो साहिल को अपडेट करने में काम आएगा। सेराई आइलैंड। मैं यहाँ से देख, यहाँ से निकला था। मांगू कंकी दिख रहा है, मैप चेक करो, मांगू कंकी करके एक बॉस दिख रहा होगा घर पे इसी जगह पे। हाँ ये रहा ना। उसको मारने से साहिल का अपडेट मिल रहेगा। चल मार के आते हैं। वो जो गुंड मारेगा वो अलग है। लैग कैसे था? लैग हो रहा था बहुत गंदा है। एक तो ये बिजली इतना नहीं वो हो रहा है इनका। वाह Order, please. क्या है? अरे चल। मेरे को भी पड़ रहा है, मेरे आजू बाजू मत रहो। तो भरेगा ना, तू भी तो मर देगा यहाँ पर। साला मेरे साथ आया तो तू कैसे बच? मेरा बहुत है, मैं नहीं मरूंगा। ओ ये रहा बहन का लुड़ा, ये देख नाच रहे थे। कौन किसको मार रहे हो? अरे वो तो मैं क्रिस्टल निकाल रहा था। अरे इधर आ जा, इधर आ जा। स्टार तो लेने दे, स्टार तो लेने दे। अबे ये क्या सिटी है? मैं आर्मी कैंप है। ये भी आर्मी है। आपको वॉइस मिलेगा। इधर जाना है व्यू पॉइंट का क्या है? अच्छा ओ, ये सेव होता है क्या? बेंच थंबनेल बनाने में काम आएगा मेरे। Your lucky day. Time for a light show. Finally, boom. What's the hell? Cool it, theory. पीछे से खंजर बोलते हैं। Fascinating. अरे भाई बिजली बिजली पता नहीं क्या क्या गिर रहा है। नीचे भी है वो देख, वो वहां से बोट में गई। ओ That was नहीं मारा हूं मैं, बिजली गिर गई मेरे पे। बिजली गिरी है ना मेरे पे। ओ फिर गिरी। तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है लॉल।
अच्छा इसको चालू करने का है क्या? कैसे चालू होगा ये? तो कहाँ? ये देखना के इधर हाँ वो permission है। पिल्लर जब है। बारिश दूर करोगे ना तब काम आएगा ये। बारिश क्या करेंगे? बारिश चला जाएगा। यहाँ बारिश जाती कहाँ है भैंस? जब से यहाँ बारिश हो ही जा रही है, रुकेगी कब? हाँ होता रहेगा जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे। अच्छा ऐसा है क्या? चलो फिर देखते हैं। दे देख बहन, ऐसे ही वहां खड़ा हुआ था आराम से, मुंह पे बिजली गिरी, मैं नीचे गिरा और मेरा पैराशूट भी नहीं खुला। ग्लाइडर जो भी है, इन्हें देख ले, एक कैरेक्टर खिलवा दिया ना उन्होंने मेरा। It's my lucky day. यार इनको कोई असर ही नहीं होगा इस पे यार। Stabilize. नैन टीडीआर हेलो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। मतलब किया को मरवाया है जो इनको मार सकता है, ठीक है? लटका रखा है, मैं लटकना क्यों है? ऐसे ही दे देंगे ये तो। आगे यहाँ से बोट मिलेगी। You're scared of lightning? इन्वेस्टिगेट करते हैं भाई। चल आगे जाना है क्या वोट लेके? सामने बैठ तो इतना इन्वेस्ट गिरी 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 बिजली बिजली गिरी है, मैंने कुछ नहीं करा है भाई। हाँ तो आप जब आप तरफ इधर सोचा ना आप अगर मेरे पास जाओगे तो मेरे को भी डर। अरे तो मेरे ऊपर थोड़ी गिरी, तेरे ऊपर गिरी, तो मेरे को तेरे से डैमेज पड़ा है। हाँ पर मेरा तो ज़्यादा स्किन नहीं गया। पता नहीं, मेरे ऊपर थोड़ी गिरी है। These things useful? गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और जिसको भी खेलना खेल सकता है, आ जाओ। बट तुम हीरो प्लेयर और मैं नूब, समझ रहे हो भाई? वो वीडियो, वो सीन, क्या सीन है भाई, मजा आ गया। और बहुत सारे मैं पता क्या करूँ, मेरे को ना इंग्लिश इतनी आती नहीं है, तो मेरे को स्टोरी समझ नहीं आ रही, ठीक है? तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं पहले वो, माँ कसम भाई, बिजली, अबे एक, मैं पता है जो जहाँ तक मिशन कर लेता ना वहां तक ठीक है, फिर एक बंदा यूट्यूब पे वीडियो डालता है, वो हिंदी करके वीडियो डालता है, ठीक है? उसकी वीडियो देख लेता हूँ जाके। तो भाई समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या करूँ भाई? इतनी इंग्लिश आती तो बेंच आईटी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा। कैन आई कम? देन यस यू कैन ब्रो। आईडी दिख रहा होगा आपको मेरा राइट साइड में, नहीं दिख रहा तो एस्केलेशन में यूआईडी कर दो। वैसे भी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है? छोटी मोटी चीजें कर रहा हूँ। हाँ कसम भाई, यहाँ जो बूम बम हो रहा है ना, ये क्या, ये कैसे चालू होगा ये? उसके बाद वो यहाँ पर भी एक डोमेन है, चल ठीक है। तीर वाले कैरेक्टर अच्छे हैं बट उनके लिए ना स्किल चाहिए ना। पिचल है पर मैं पिचल रेजर को अपग्रेड कर चुका हूँ पिचल की जगह। अगर उसको सब्सिडी से सपोर्ट करें अब वो ब्लास्टमैन भाई बोल रहे ज्ञानू मिलेगी, कब मिलेगी पता नहीं, लगता तो पर उसके लिए फील्ड चाहिए। पानी के अगर अच्छा डिशेज बनाने फील्ड चाहिए, योली है ना, कोई भी फील्ड वाला हो फील्ड चाहिए। इसीलिए तो मैं जोंगली को साथ साथ ले बोलता हूँ। योली है ना फील्ड के लिए मेरे पास। एंड चोट अरे यहाँ पर बॉस होगा। इधर क्या होगा? सब तो बंद पड़ा है भाई।
ये क्या है? चैलेंज? ये ब्लैक मैच करने का चलेंगे इस पे टाइम भाग है बैठ, इसका टाइम थोड़ी है। इसके बाद मैंने चालू तो कर दिया, कौन करेगा? भी जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ इसके खिलाफ ना ट्वीट हैशटैग चला दो, वैसे वी वांट जेंशिन इम्पैक्ट इन हिंदी में। हिंदी में बना भोज, तब करो हिंदी में। मुझे नहीं पता, करके तो जेंशिन वाले करेंगे। भाई बढ़ जाएंगे भाई, व्यू इनके वो बढ़ जाएंगे, पता है, खेलने वाले। अगर इंडिया में होता ना तो फिर एनीमे आ जाता इंडिया पे, मालूम है एनीमे नहीं आया और एक गेम है। अरे एनीमे करते हो रहे हैं अब हिंदी में डब, कितने एनीमे हिंदी में डब कर रहे हैं, अब करना पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। कितना करना है इधर गया बे? नीचे जो जाको पता नहीं क्या था बे। जाको सोतू कुछ तो था। पैसे जुजुत्सु काइसेन, वाह, इस जगह का नाम। ऐसे एक जगह का जुजुत्सु काइसेन तो मेरे को भी पता है, तो बीजीएमआई में ही आया था। जाके इसको मार ऊपर क्या है बे? वहाँ पर ऊपर सकते हैं। टेस ब्रो, हेलो ब्रो। बिजली गिरेगी जहाँ तू जा रहा है। आजा करते हैं बस। हाँ, अभी चमकेगा ना फिर बोले करंट लग रहा है। हेलो ब्रो, हेलो डेस। Order guide you. Solidify. Cut down. Like this. Empty chest. Good for storage. भाई इतने इतने बड़े बड़े विलन और कॉमन टेस्ट, ठीक है भाई, जितना ला। मैं बोला ये वाली चेयर पे कोई दबा मार वो ये क्या बहन का लोड़ा? इसी से इस पे जो मारता है बोला मैंने ये लिया क्यों है? ये तो अच्छा पानी वाला है, चल काम आएगा। पानी वाला नहीं इलेक्ट्रो वाला है तो इसका सिंबल तो हाइड्रो आ रहा है, I taste blood. तो शॉक तो लगेगा ना, मेरे को दे दिया डैमेज। I come to help. मैं मर गया, हील करना पड़ेगा, कुंड लग गया मेरे। आई एम जीवन 4th आईडी ब्रो, या आई नो दैट ब्रो। गार्ड लग गया बेंच, एक ही मारा उसने, कुंड बढ़ गया। यही अच्छा नहीं लगता मालूम है, अलग अलग काम करता है। एक डैमेज भी नहीं दे पाया था। एक क्या मार दिया? इस पे ऐसा है वो तेरे को भी मिला क्या कुछ? हाँ वो भाई ये ठीक है बहन, जो पहले खुद अकेले मार लो, फिर किसी के कम यार के साथ जाके उसके साथ भी खेल लो, उसके साथ भी ले लो। हैं? ये देख, ये देखो ये छेद तो अजीब सा लग रहा है। सॉरी हो गया। अबे मेरे स्ट्रीम पे सब चलता है। अभी बिल्ली को नहीं देखा क्या कर रही थी वो? ऐसी थोड़ी बिल्ली, ये अभी चैट में आए थे ना। पूरा ज्वाइन कर लो, मैं वैसे भी एक्सप्लोर कर रहा, ज्वाइन कर लो। वैसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। I'm hungry. Let's पता नहीं hunt. तब आ जाएगी नहीं आएगी। ऊपर जाना है ना नीचे से जाना है? जा रहा है ऊपर जाना है ना। एक तो बिजली ने गांड मार रखी है भाई। हाँ देख लिया।
भाई ये हरी घास को नीली बना दिया मैंने, ठीक है भाई। बारिश हो रहा है ना। हाँ, तो नीली क्यों हो गई घास? हाँ तो यहाँ पर 24 साल बारिश हो रहा है, 24 साल से बारिश हो रहा है। अगर आप वर्क करोगे आप देश का बन जाएगा। गॉड ऑफ, अरे मेरे पास फायर वाला गन है, किससे करेंगे? इसे मारना है। अबे नहन भाई जो आए हैं वो नीचे क्यों रह गए, ऊपर तो आओ। नहन भाई चैट में हो क्या भाई? Are you in chat? Can you join the VC? I'll give you. और ये हम आसमानों की ऊंचाइयों पे। ये बॉस है बेंचो। मुझे लगा अपना बंदा है। Empty chest. मैं Good तक for से बात storage. करनी होगी। चिल मार के बैठा हुआ है वो। देखो इधर और इधर पूरे कॉपी सीधा कर ऊपर एक स्टार होगा। ये जी दबाने का बोल रहा है, जी दबाऊं इसकी। जी। फिर ऊपर एक स्टार होगा, जी दबाते रहो। फट दबाते। मेरे को चोट लग रही है, कौन मार रहा है? मर गया मैं। कैसे मरा बट? बिजली गिर गया। अच्छा भैंस दूसरी बार बिजली गिर रही है मेरे पे। ओ शेडी का मेरे से अलग ही प्यार है। मारो सबको, मार तो दिया पेल दी भैंस। माना मेरा कैरेक्टर रेजर है, इसका मतलब ये थोड़ी बेंच पुंड मारोगे तुम। चालू कैसे करने का है? तेरा तो नहीं हो रहा वो बिजली जैसा बनने वाला। अच्छा पर भी है क्या? जी दबाना। अरे अच्छा टी दबाना है। दबाते रास्ते में करते रहो। ले लिया क्या? और क्या? नहीं इधर एक 2 महीना। Fireworks are for now, but friends are forever. भैंचोद बिजली गिर रही है मुंह पे। आज आ जाओ दे दो। चाय भी ठंडी होगी मेरी। आज तो आप चाय करो। जा के देता है। ठीक है 2 मिनट में आ रहा है, ठीक है तो क्या रुकना ही तो बवा रहा है, बिजली गिर रही है इधर उधर। नीचे चुप के रुकना पड़ेगा। बाम है। ओए हम रागल भाई। टीम एक्स नोबिता, हेलो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। इट्स मी ब्रॉन क्रूचर वाइटी। वाह नाम चेंज खेल लो तो। अरे बहनचोद बंद मार ले। Freeze! मैम चिलेगा दोबारा। मैं जा रहा हूँ, वो स्टैचू ऑफ 7 है क्या है सामने। हाँ हेलो बी बैक, आई गॉट AFK, पापा ने बुलाया। ओके वेलकम बैक। शुड आई कम विद माय मेन आईडी और नॉट? ऐसी मर्जी आपकी, जिसकी आईडी पे।
अरे भाई ये बिजली गिर गिर के जो बिजलियां गिर रही है ना मेरे पे। तो भाई यहाँ खड़े रहो आराम से, सबको रिप्लाई मिलता है। तो दिया मैंने। भाई आ जाओ, चले किसी की आईडी से आओ, इधर चले। गाइस लाइक करो पहले तो। कहाँ चले गए? डोमेन इधर। अब मैं स्टैचू ऑफ 7 पे आ गया, बिजली ने गिर गिर के मेरी बुंड मार ली है। बिल्कुल चलो। कंट्रोवर्सी करता है ब्रो, कैसा आइडिया है? व्हाट द फक, ऑलरेडी डन, नाइस। हैंड का बिजली इसकी। अबे मैं उधर ही तो था। उधर आ गया था। यहाँ पर एक स्टार है, रुको पहले डोमेन को अनलॉक कर लो फिर जाके इसको देना। है मैंने नहीं किया शायद। वाह यहाँ पर क्या है? Empty chest. अरे यार ये बार बार नोट खुल जा रहा है, चूतिया। इनको ऐसी सिचुएशन पे ऐसी जगह पे नोट देना जरूरी है क्या? हाँ, दौड़े का। ऑप्शन होगा। अबे तो चेस्ट उठाएगा बंदा या वो करेगा? किधर है स्टार? अरे स्टार को छोड़ो, स्टार ले मैं दिला दूंगा। डोमेन अनलॉक करना है ना। तुम कुछ भी बोलो समझ नहीं आता। हाइपर तुषार को चैट टाइम आउट दे दो, कभी भी टाइम पे लाइक नहीं करता है। ओ ये कर सकते हैं। मिलना क्या है इसमें? कुछ तो मिलेगा ही नहीं। मैं 100 दे रहे हूँ। ये क्या है भाई? ओ ये क्या है? डमरू डमरू पड़ा है। These things. अनस्किप 12 एड आया आपके चैनल पे। अनस्किप 12 एड्स, ठीक है। बिना मोनेटाइज के ऐड आ रहे हैं भाई। ठीक है भाई, क्या करना है? कौन बोल? फिर क्या तू टीपी मारेगा? वाह अरे इनको चैट पे लिखना पड़ेगा वीसी ज्वाइन करने के लिए। इनको आवाज नहीं आ रही। ऐसा हो सकता है कि मैंने लाइक ना किया हो। क्यों है पुरियोस? ओए मेरे ऊपर चढ़ गए। पब्लिक में झूठ बोल रहे हो। वाह अरे काय हस्बैंड बड़ी वेलकम। 8 लाइक हुआ अभी तक, सीरियसली। I smell rabbit. चैनल मोनेटाइज है सब जानता मैं बराबर। हाँ टाइम आउट दे दो 10 ग्राम। वैसे भी आज तक किसी ने टाइम आउट नहीं दिया। देखते हैं कि कैसी फीलिंग आती है। टाइम आउट की फीलिंग आती है। Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. रुको करती हूँ सर्वर में। Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. इसको गेमिंग पार्टनर रोल दे दो ना।
वही तो कर रहा हूँ। और एक वो है नहीं क्या डिस्कॉर्ड पे मौजूद? I keep watch. You leave, you call me. सब चैट में। हेलो हेलो, नाउ यू कैन टॉक ब्रो। अरे डिस्कॉर्ड में पता क्या, जब मैंने सर्वर बनाया था ना, तब मुझे लगता था कि सीधा सेटिंग से जो रोल दे देते हैं वहाँ से जो सेटअप हो जाता है, तो चैनल पे भी वो मतलब हर एक चैनल पे भी वो सेम ही सेटअप रहता है, लाइक वॉइस का। पर बाद में पता लगा कि अलग हो जाता है, जो चैनल का अलग देना है, सेटिंग से अलग देना है। मैं भाई ये करता हूँ क्या, मैंने उसको पार्टनर का टैग दे दिया था, नहीं आया। उसको बोलो क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्ट करके देखो। उसको आवाज आ रही है हमारी? आ जाओ। एन भाई डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो, तुम्हें दे दिया रोल। समझ नहीं आता यूट्यूब को हिंदी गाली कैसे पता चल जाती है। यूट्यूब इंडिया है ब्रो, इसमें इंडिया की टीम भी तो है। आपको बोला उसने हिंदी का भी कैसे समझ गया? नहीं वो रैगल भाई, यूट्यूब इंडिया को और यूट्यूब को ऊपर चढ़ना है। देखो Avoid the जाके टाइम trace. मोड मिल गया है Follow तो जा me. सर्वर में। इधर भाग जा तू। These weapons need more tempering. मैं बहुत गाली लिखता हूँ आपके लाइव पे, लेकिन अभी दिखता नहीं। दिखता है नहीं दिखता। चैलेंज है तो। क्या मजाक चल रहा है? इन्हें रोल मिला क्यों नहीं? हेलो हेलो, अच्छा मिल गया। इधर जा रहा है तुम? अरे मैं यहाँ पर ही हूँ, मतलब देखता है इसको, फिर मैं बात करता हूँ। एक काम करो, गाली में एक वर्ड एक्स्ट्रा डालो, फिर हाइड नहीं होगा। हो गया तो इसका माइक ऑन। हाँ हो तो गया, हाँ तो बट आवाज कम आ रही है ना। आवाज बढ़ाओ अपनी सेटिंग में जाके। आ जाओ। हाइपर भाई इधर आना है। एन भाई आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई भी नहीं दे। नाच रहे हैं, को डिस्टर्ब मत करना। ये देखो क्या कर रहा है, कहाँ चले? देखो नहीं तलवार से जो बिजली गिरता है ना, वो डर रही है अभी। ये भी ऑन नहीं कर रहे थे, दूर रहो। Right here. HS tag. Me unable to UPI, sorry। ठीक है भाई। हो गया ना वो चैलेंज का। वहीं से मार रहा बकरी, वहीं से मार रहा चूज। लाइक कर दो भाई, यूपीआई थोड़ा लाइक करो। वोट लेनी पड़ेगी। तैर के चलते हैं तो क्या मतलब है? मैं सिर्फ बात सुनूंगा,
क्या करूंगा, ठीक है, बट व्हाई? यार, तभी तो मजा आएगा स्ट्रीम पे बात करके। आ जाओ, आ जाओ। कम्युनिटी पोस्ट आ गया अब तो। कहाँ आया, अभी ऑन ही नहीं हुआ कम्युनिटी पोस्ट। एक हफ्ते बाद, अगले अगले सैटरडे संडे तक होगा, इसी संडे सैटरडे। क्या हुआ इसमें? अरे सब्सक्राइबर से आता है कम्युनिटी पोस्ट मजा आया। 500 पे आएगा। अच्छा चलो, कहा आ गया, आएगा। हाँ, लास्ट टाइम कितना हुआ आपका? फर्स्ट टाइम 3,500 का ऊपर ही है। हाँ, तो ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ तो पर सब्सक्राइबर भी तो चाहिए 1000। तो हाँ भाई, आपका बस आपके लंबे बहुत है। तो है ही भाई, ऑडियंस ऐसी बनाए ना शुरू से मैंने भाई। आ जाओ। कम्युनिटी पोस्ट का भी अलग रीच होता है। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट का वीडियो से अलग रीच होता है। आई नो दैट। रूम में मेरे भाई सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो चाहता हटा दिया गेम। ओके ओके, कोई बात नहीं। अरे बहन, बर्फ जमा देना। Cool it. Dodge this. माइनस से भाई 10 बंदे भी एक करना बहुत मुश्किल है। You did 506। हमने Freeze. और तुम्हारा भाई लैग। वो तैर के आ रहे भाई। Dodge this. वाह, Freeze. ओके, गुड आइडिया, गुड आइडिया। बहुत सही। मेरे को कैमरा चूज करके वाइस। अरे मेरे बर्फ चला गया क्या मेरे नीचे से? क्यों, तो नीचे गिर गया क्या? वाह वाह, बोलता बर्फ चला गया क्या मेरे नीचे से। इसका हो गया। What's the hurry? ये बैन करोड़ा क्या कर रहा है? मेरा मुंह है एकदम बस साथ तो जमा दिया। अरे मैं मर जाऊंगा। Get down to business. मर जाएगा क्यों? अरे मेरा मुंह है एकदम बेकार है। Free. No. किल दिया उसका। Me lost 600 प्लस, अमेजिंग। अरे तो वीडियो तुम्हारा लेट आता है ना, तुम्हारा और भी तो काम है ना। एक बात बताऊं भाई, जो लाइव से ऑडियंस बनती है ना, वो वीडियो से नहीं बनेगी। ठीक है, बात तो है। आ जाओ, आ जाओ। ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इस पे बनाते हैं, तीनों को बनाना पड़ेगा, फिर जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे है, तीनों को बनाना पड़ेगा। Freeze. कैसा लगा मेरे वाइफ का घर? अब बहुत डरावना है भाई, मुझे मुंड फट रहा है भाई। ये बढ़िया ट्रिक है बहन, ये बढ़िया ट्रिक है, कुछ भी बोलो। ठहरने की जरूरत ही नहीं, अल्ट मारने से क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा इसके अंदर। स्ट्रीमर से हाँ, लाइव पे कनेक्ट होती है। हाँ, डरते हैं अपने पास राम सेतु है, समझ रहा है? क्या सेतु है हमारे पास। ये तो इस तलवार से बनाते हुए जा रहा है, ये बढ़िया चीज। ये बहुत गंदा है ये। Take flight. तो रुक क्यों रहा है, आगे आते रहे ना। जी गाइस, केया सेतु देख लो, राम सेतु देखा, अब केया सेतु देखो। तो सामने देखो, स्वागत के लिए खड़े हैं चाचा भोजड़ी वाले। इधर क्या थे?
क्या मतलब तू आ गया, उड़ के आ गया, वाह वाह, कैसे कोड ले लेते। अरे जरूरत ही नहीं है, लैग बहन जो लैग क्यों हो रहा है इतना। It's my lucky day. लकी डे। No. These things useful? ऑफ कोर्स। सामने तेरे good point है। Clarity तो बहुत अभी पेज लाइक करो। आ जाओ, कहाँ हो वहाँ? हाँ ये कैसे चालू होगा बहन, तो इसके लिए तो फीचर चाहिए। यहाँ पर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा इसको, इज्जत देना पड़ेगा ये देखो। इज्जत दो इसको। यहाँ पर ये दिखा रहा है तो हाँ आईडी कैरेक्टर दो, पहले ये वाला फिर ये वाला, गलत कर दिया। क्या सही तो है, पहले वही वाला तो था। पहले वो वाला था, ये वाला। अरे नहीं बे, हाँ देखो, सही तो है। पहले इसको कर दो। यहाँ पर फिर इसको। Get back. स्टोरी में स्टोरी नहीं करा आज, मैंने स्टोरी चालू ही नहीं करा, एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऊपर से ऊपर से ऊपर से जमा, ऊपर से जमा। देखा हो गया ना? Empty chest. Good जो for भी कर लो भाई, storage. रियली डजंट मैच विद ये वहाँ पर एक्सपीरियंस। क्या जाओ, ये ऊपर से एक्सपीरियंस ऊपर चल के जब जमा। क्या होगा ये फिर? इस पहाड़ से, ये ऊपर वाला पहाड़ है यहाँ पर। हाँ तो चढ़ तो गया, इस पे जंप मारूं? नीचे आओ, नीचे आओ, रुको रुको, अभी मत मारना। नीचे आओ, अभी देखो, अभी इसकी तरफ। यानी क्या बोला, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रॉन्ग स्पेलिंग। क्या आपने? जगोनी में जाओ, मस्त है, जा रहे। नहीं मैंने नहीं देखा इसके में। दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा पकड़ रहा है। यहाँ पर इसको ये वाला मीन में कहाँ? क्या क्रिस्टल ले रहा हूँ, आ रहा है। ये वाले में से कुछ तो होगा। Cool it! What's the hurry? क्या लूँ यहाँ? Freeze! Take flight! एक्सपेक्टेशंस, अच्छा। मैं कह रहा हूँ क्या बोलना क्या चाहते हो। उधर सामने डांडिया चल रहा है What's the उनका। hurry? रुको ना, ए भाई, देख जरा। मैं तो गया ही नहीं उधर। My apologies! Ah! Take flight! So sorry. Fairy. No. आजा आजा, आवाज तो जोर से मत जाओ। इस जगह पर। बाकी लैपटॉप का मानना पड़ेगा, साला GTA 5 भी लाइव कर लेता है। मेरे लाइव में गेम सही चलता है बट स्ट्रीम में लैग दिखाता है, पता नहीं क्यों। वो GPU की वजह, उसके CPU की वजह What's से। the hurry? क्रिस्टल ये क्या कर दिया? ये तो मार दिया।
हाँ तो ई रेजर के ई से होता है। ये क्या है भाई? ओए यहाँ पर एक टेलीपोर्ट है ना। हाँ ये जगह मेरे को याद है। अरे अभी तो भाई मेरा मानना पता ये है कि अगर मैं ग्रो हुआ तो मेरे से जुड़े हुए जितने हैं ना सबको लेके जाएगा मैं साला। इधर आओ, अरे इधर आओ। आ रहा, रुक जा, एएफ के थोड़ी देर रुक। देखते हैं लैप लूंगा So this गेमिंग is a वाला। day in the life of a हाँ traveler. क्या करना है इसमें? टेलीपोर्ट पॉइंट किधर है इधर? ये रहा ना। हाँ ये जगह बहुत खूबसूरत है। वो देखो सामने दिख रहा है कितना खूबसूरत है। ऊपर से जाना है, नीचे से बहुत टाइम। दिमाग खाने वाला पजल। दरवाजे से मत जाना, मत जाना। अरे उल्टी जगह ले जा रहा है, उल्टी जगह ले जा रहा है। उससे सेटिंग का रोटेट कर सकता हूँ मैं ऐसे। चले जाना किधर है मैं वैसे? पहुंच गए अच्छा नहीं जाना। साला मेरे को झटका दे दे। मेरा भी यही सीन है बराबर। अरे मैं उसको रोटेट करके वहां जा सकते थे जहाँ तू बोल रहा था। नहीं जा सकते। अरे एक रोटेट दो डोर चाहिए। अगर डोर से वो कनेक्ट होगा तो फिर जा सकते हो। हाँ तो दो दो है तो सही। हाँ तो यहाँ पर डोर कहाँ पर है? मैं क्या बोलूँ हाइपर भाई, वीडियोस भी डालते रहो इसका हाईलाइट, क्योंकि वीडियोस के रीच ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रीम। ओके तो देखो वहाँ पर एक और टेलीपोर्ट दिख रहा है। आ रहा। भाई ये क्वेस्ट पूरा करते करते तो घंटे लग जाएंगे। बस तो कर। ये पजल जो भी है। ये अगला दूसरा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन दूसरी जगह पर इससे जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर गेट है। अबे मेरा क्यों नहीं चालू हुआ? अबे उल्टा ले गया मेरे को। हाँ वही कर दिया। बंदी हो गया रोटेट करने पे। वाह हाँ बोला ना रोटेट करने। रोटेट का ऑप्शन दिया है क्यों होता है? कल करो कि स्ट्रीम सब आएंगे तो आएंगे ही फिर। क्या हुआ? कर लो कर लो। भाई जो लैग हो रहा है जो लीव होने पे तुम्हारे। प्रॉब्लम तो नहीं आता। क्या हो गया अभी?
double pin migrated to level 7. Clash of Clans खेले हो हाइपर भाई? क्या क्लैश ऑफ क्लैन? नहीं। नहीं खेले? अबे मैं बोलता रहा हूँ, मेरे को ऐसे टाइप की गेम्स पसंद ही नहीं आती थी शुरू से। मेरा ऑनलाइन ये पहला गेम था Clash of Clans, तो ये सब खेला नहीं। पर उतना नहीं खेलता था। ये मैं कहाँ आ गया? हो गया? मैंने इसको ओवरऑल कर दिया। अरे ओ बेटा तू, अरे दोबारा भेज। वाह भाई ठीक अरे है मैं भाई, ओवरऑल कर रखा था ना। ठीक है भाई। ये लाइव भी से तो लॉक करना I पड़ेगा। smell rabbit. क्यों? वो तो हमको ज्वाइन कर लेगा, ज्वाइन करके सुनेगा हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा तू गलत जगह पे है ना, इसलिए तो स्क्वाड या डुओ में बैठता हूँ मैं। हाँ तो लाइव भी से किसी मना कर रखे हो? मैंने बंद कर रखा है। इस जगह के नीचे ही एरिया है उसका। उसका नमस्ते एनको नोमिया है। क्या कहते उसे? क्या वो क्या होता है? ये वो बहुत कष्ट का होगा उस जगह के जाने के। ये क्या है ये बेंच? यहाँ पर जो नीचे कुछ होता है। ये देखो, ये हो गेम का गया। नमस्ते हो गया लॉल। रुक देखता हूँ मैं। आगे हो रुक आगे। Dude, मतलब मिस अरे ये वाला क्वेस्ट कर सकते हैं, आजा कर देते हैं। इधर रहते हैं। ये बात कर नाम बहुत अच्छा लगा। ये घर था सांप का, लेकिन रेडन ने इसको मार दिया। आपका रिपोर्टर दिखा रहा है। अच्छा नीचे है। यहाँ पर ये लड़की का नाम अच्छा नहीं है यार। दिवाता लड़की है? कहाँ है लड़की? कहाँ है? ये तो रही सामने, मेरे सामने इजुमी नाकी। यहाँ पर मैं जहाँ पर अब वहाँ मेरे को नहीं दिख रही कोई लड़की। जो मैं कह रहा लड़की मेरे को तो नहीं दिख रही। मैं तेरे को कैसे दिख रही है? ये तो चीटिंग है। वाह तो यहाँ की बॉडी ये भी सिक्योरिटी गार्ड है ना, खाना ये साले किसी भी काम करेंगे। साला हमें पेल के चले जाते हैं, मदद भी नहीं करते। बोलता है My shift should be over by now. Where's my policeman? अबे गिनती के टेलीपोर्टर हैं तो 3 तो हमने 4 तो ओपन ही कर दिए। एक बचा है, वो भी ये पता हाँ तो पता सुमी आइलैंड इनजुमा। स्टैचू पे आ जाओ। गाइस लाइक शोइंग। भाई अगर रेजिन मेरे पास 8 लाइक ठीक है भाई। रेजिन होता मजा आ जाता।
सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा, लाइक भी नहीं हो रहा, हो क्या रहा है? और ये बैलून को फोड़ो। मेरे पास कोई नहीं है। ये क्या है? कौन क्या है? इसका कैरेक्टर देख। जमीन में घुस। कैसे कर रहा है? ये देखो असली कैसे करता है। ठीक है। वो आ गया। Illusion shattered. आ जाओ। क्या है? इल्यूजन? ये क्या है बे? ये नहीं, ब्लू ब्लू सा चमक रहा है कुछ, बबल सा। आ गया। अरे आप वहाँ से नहीं आए क्या? बच जाएंगे। कहाँ से? नहीं, ये नीचे बहन के रोड़े दो खड़े हैं। अबे मैं ऐसे चढ़ नहीं सकता, फक। हाँ तो बोला ना वहाँ पे तू गॉड के पास कैसे पूछ कर पूछता? घूम के आ जाएगा। हाँ, टेलीपोर्ट में जितना लोडिंग लगेगा उतने में तो मैं चढ़ जाएगा। वो अच्छा एनर्जी रिसर्च वाला वर्जन रहता है 35 160 These things useful? Cannot interact बस राउंड with object. आ जाओ। Freeze! आग जला रखे लग This moment will be frozen in time. मेरे को क्यों मार रहे हैं? आप इसको मार रहे हैं, मेरे को रहा है। मैंने मारा ही नहीं। Time for a light. Cool it! मैंने वो मारा, वो हुआ ही नहीं। Up and away. की बहन। There you are, Freeze! eavesdropper. There is no escape. Now you shall perish. This is Unfortunate. no longer. ये तो भाई टीम के साथ खेलने से ना, चालू होने से पहले खत्म हो जाते हैं एनिमीज तो। ये क्या है बे? कैसे करने का? किसको कैसे करना था? अरे वो क्वेस्ट हम लोगों का अभी जो बोला ना, किसने बोला ना कि नीचे जाना है वहाँ पर, वो उसका है। दो आ गए, तीन आ गए। अच्छे दोनों काट दिया। इलेक्ट्रो वाला वो बहन जो पानी में है वो इधर है। What's the hurry? मैं तो हम तो यहाँ पर कर देते ना। हाँ वाला करके कोई फायदा नहीं, वो ऑटोमेटिकली वैसे भी ओपन हो जाएगा। भाई वो तो अच्छा वन डिफॉल्ट भी नहीं है, ये कौन दौड़ रहा है? वहाँ को क्या दौड़ रहा है? मैं अभी तो आया हूँ, जो लोडिंग हो रहा है मेरा तो। दौड़ रहा है? कहाँ जा रहे हो आप? अबे मेरा लोडिंग में है डिस्क। बस हवे पे चल रहे हो? हेलो, हैक लगा है क्या भाई? What's the hurry? ये जमीन में, मेरी स्क्रीन में ये जमीन में घुस रहा है।
To the ferry. Fascinating. Fascinated. फिर कौन सा डोमेन है? यहाँ पर है योगा का यहाँ पर है ऊपर से कुछ है। What's the hurry? What's to hurry? Cool it. What's the hurry? Dodge this. किसी जगह जाने के लिए भी अभी देखो ये बहन का लड़ा सो रहा है। So sorry. मजे से सो रहा था भाई। These things useful? भाई यहाँ का बोर्ड का सिस्टम तो उन्होंने बंद ही कर रखा। अबे क्या चैलेंज है उनका? चैलेंज करके कंप्लीट करना यहाँ पर तो पेड़ पे रहता है। हाँ ये रहा, इधर आ गया। यहाँ पर उसको सीधा Freeze! मेरा तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आजा आजा हो गया। अबे मेरे को तो आने दो। मर्सिडीज कहाँ का है? तो जाना किधर है? दो मिनट पे। मर्सिडीज में वाह। जहाँ पर से अरे जहाँ पर से यूमी का आर्टिफैक्ट मिलता है कहाँ चला गया वो? ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं हमने इधर का पूरा। अरे डेली वो भी नहीं करा अपना, क्या कहते हैं, कमीशन। वेरी गुड बराबर। बाद में कर लेगा। लेट हो गया था आज मैं, लेट। अरे मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ अपना स्टोरी कंटिन्यू करेगा अब। हाँ ब्रो, स्टोरी कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आते मैं सीधा ये एक्सप्लोर करने आ गया था। स्टोरी भी जरूरी है।
Okay, have a nice night. Okay, bro. Thanks for joining. Thanks for subscribing, bro. ऐसे आते रहना, खेलेंगे साथ में. मैं भी गया मेरे वर्ल्ड. ओके. To the I'm hungry. Let's hunt. Let's go, guys. Let's continue our story. Guys, like करो यार. Like and subscribe. फोटो है भाई, चैट में अभी आ गया. ठीक है. चले गए क्या वो भी? हाँ, मैं स्टोरी कंटिन्यू करूंगा ना. वो अपने वर्ल्ड में चला गया. ओके. क्या है भाई, डरावना सा. नो फॉरेस्ट. The fuck? What is that? So fucking good, bro. कोरा ही कोरा.
ओके यार, पर थोड़ी देर में आती हूँ, काम करने जा रही। ओके ओके, कोई बात नहीं। So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Welcome at last to the Kamisato residence, honored guest. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Oh, behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. बराबर। Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and कहाँ गया? wearisome कहाँ है? journey over हस्बैंड the कहाँ sea. गया? हेलो। I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... Oh, See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. no, please, wait! Please, don't go! I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. बराबर। Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. बैठ गई। Rotate my chair and sit comfortably. Because my back is so dead. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great.
the fuck is this? Rain outlines your fate. Cool it! Freeze! What's the hurry? Dodge this! Freeze! Don't get frostbite. नीचे गिरे तो वो भी मेरी गलती, इनको नीचे आके मारो। ये भी ठीक है। Quite the fun. Ponda village. Talk to the Electro Archon whenever you are troubled.
Ayaka told us about. Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. One day, I'll be as great as Ryuji. Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. One day, I'll be as great as Ryuji. If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let बस him लाइक leave करो यार, when लाइक एंड he's सब्सक्राइब नहीं हो रहे in क्या this सीन? state. He's a lost soul. Seems like he's a well-respected guy around here. पाइमोन को आलू माथुर या मटूर के साथ पका लो। मछली के You इतना must be अच्छा लग रहा है, वो Tejima. काम करवाता So है। what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, true. But that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? Right. But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. बराबर। Oh, इसका maybe विजन if चोरी you कर just लिया, try a little harder to remember, इसकी then वजह से इनकी it'll याददाश्त जा all come flooding back. रही। The fuck? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember.
इससे याद रहोगा yes, तुम्हारा विजन yes, चोरी you कर do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! मेरे So if सीनियर we रूम want to में keep Tejima इसको from leaving, खेल we रहे हैं। just need to वाह, find his diary. दी It must एस be को around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. बराबर। डायरी This ओपन में looks रखी है, like गीली हो गई Tejima's तो। diary, all right. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snakehead instead. Today, I helped rescue a kid कल who भी had खेल fallen रहे in थे, the आधी रात water. को मैं साला After I सोने pulled की him कोशिश out, करूं, वो he told me that his bomb best has friend been Bamboo was planted, still in the counter water. terrorist means I searched the water the ये whole सब आवाज आ afternoon रही थी। before लाउड finding स्पीकर पे out खेलते that हैं, what the fuck? Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The हेडफोन का क्या करते omamori हैं? you gave me has फिर वो, faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. अरे रूम में 4 बंदे अपने this is लैपटॉप the में omamori बिना Teijima कोई wrote हेडफोन about. के आए हिंदी कन्वर्सेशन। वाह, Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would अब have तो thought मैं it भी बाहर belonged to a आ child. गया, अब तो माइक But ऑन कर anyway, सकता है। if he had this बराबर। with him all the खेलता क्या है? time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? One day, I'll be as great as Ryuji. Bro, seriously. One day, I'll be as great as Ryuji. ये में क्या होता है, परसों से चालू नहीं किया। मैं टीम में इसके साथ खेल रहा था, कर लिया परसों। 3-4 दिन से हाथ तक नहीं लगाया। पर तुम लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पर? कोई क्लू दिख रहा है? मेरे को तो दूर दूर तक कुछ दिख रहा है। Okay. I wish it could be like this all the time.
as great as Ryuji. क्या मजाक है? One day, I'll be as great as हाँ दिख रहा है, घर एक के अंदर है। साले I didn't know you were such a slacker. great as Ryuji. नोई ब्रो What's the hurry? One day, I'll be as great as Ryuji. One day, I'll be as great as Ryuji. The fuck? हाँ मजाक है ब्रो ये। Seems all the other knights already have their hands. One day, I'll be as great as Ryuji. Here we are! हालत This देख seems लो। to be somewhere that Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. खुदाई चल रही। It looks like a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Konda If we Village. become spare during Sounds so the familiar. go wait Where for is the that place Konda again? village, there is some same almost. Huh. So the reason Tejima came here was to wait for someone. बराबर। But he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Catch the wind. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years.
Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that be upsetting for her? When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is missing. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. What's the hurry? Rain cutter! I must leave no stone. I missed a spot. Steady as stone. Dodge this! How fortunate.
They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma, the ones actually enforcing the Vision Hunt Decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this! Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself, I just know it. We'll starve without them. No one seems to care वो दो about केस us. घूम रहा है. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt Decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling, like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. Huh. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far.
We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. You demand, boss! These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson! Cool it! Picked the wrong test subject. Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew he shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. Huh? What the? There's nothing in here but IOUs! Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Yes, bro. Hello, bro. Welcome back. मेरे को टेलीपोर्टर भी ऑन करना है. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa, whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs,
He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. But we didn't buy anything! Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. 2,000 mora should be a fair price. At least we now know where the emergency provisions were coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. बराबर. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? On coming in. Appointment get out. Leave?
Shit, I can. I get Yanu. Click, 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 click. Okay, I can buy this. Yes, 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 yes. Yanu incoming. Boom. अरे नहीं चाहिए भाई. Heavy sim. ये दोनों मेरे को मिल चुके हैं. ये तो है ही. बदतमीजी है ब्रो. Oh, dude. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true, right? That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, because this sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act,
and scolded me severely. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember, all I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should..." Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need, and look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision, and the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. लाइक्स नहीं हो रहे, क्या कर रहे हो? Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. कितने बंदों से बात करूं भाई? The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but नाना को I'm still worried about him. अबे ये तो सिंचन की Things वो have है, gotten नाना को दे दी। dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though, It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. अच्छा? No! You got it so wrong! We just came here to... Hello, hi, hello, welcome back. Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. गाइड इतनी शांत We क्यों है? haven't कोई है नहीं arrived ना at the इसलिए। best of times, I'm afraid. Since they got possessed recently, कहाँ गए सब? I and don't he's know. still recovering. उनको He's बोर not लग रहा है able to गेम take on क्योंकि any new स्टोरी बहुत है disciples ना for इस the गेम time में being. इसलिए।
I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon. Back, bro. A name I'm sure you've Welcome already... back. Though self-taught, he once said that his... And so... यार this story But then- सेम ही चीज तीन लोगों से क्यों Not पूछी? long ago, he says the strange Junior and I. But if I'm honest, The Grand Naru. You haven't heard of it? Not that we'd have it. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if मतलब you're मेरे जैसा interested. कोई है ही नहीं, कोई बता के नहीं Losing जाता, your सब ऐसे ही vision can चले cause जाते हैं, possession? गलत बात है Guess ये, we should क्या come बोल back this सकते हैं? evening and see for ourselves. अब उनको जबरदस्ती थोड़ी मैं बैठा के दिखा सकता हूँ, उनको जब तक मन करता है तब तक देखते हैं। मिडनाइट क्या टाइम था? 18 to 24। अरे यार गलत। ये भी बात सही है यार। I'm hungry. Let's hunt. Shh. Just now, when she asked him who, it looked like he was... All the while he kept... One of them was... Sensei wouldn't... The ritual has... Please, Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. Seems they aren't here. Should we keep going further up? Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious person sighted! That's gotta be it! How did you catch up with me so quickly? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. भाई क्या है ये? Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day, long before you ever showed up. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait, that means you must be... Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same sword master, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Guys, like Practitioners करो यार, of like Make-Yoshi and Sui subscribe. art seek to achieve stillness of Can we mind, reach freedom 50 from all agitation. 510 So the majority of subscribers disciples are indifferent to and rank and 15 reward. likes? I was no exception. Can we? Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best sword master, barely days into his training, showed that he had a fickle mind. And I thought so too. Only then did I... He was Sure sounds... because until he of all the disciples, Domon's arrived later,
After that, So, I decided to. So you see. Okay, you've heard my story. Still. What? You're saying he isn't possessed? Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please. Try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself, and all is certainly not— Lady Yai— The head shrine— Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant ब्लास्टमैन experience भी in the थोड़ी देर के exorcism लिए of आए थे, evil पता नहीं। spirits and aversion of— I am unable to say for— Excuse me, Miss Inagi. That won't be necessary. I must leave now. Who'd have thought Lady Yai herself— Do you mean to say that's— No, that's not what I meant. I just mean this— Anyway, given that you've traveled all this way just to meet her— Sure. Who knows? Maybe. तो मैं टेलीपोर्टर ऑन करके आया। Surely that child isn't flocking off. Do you think that's Lady Yai? Oh, no wonder Junior is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? क्या मतलब ये It was फ्लैट हो गई? probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. नेट स्लो चल रहा है तो For to be stripped of one's vision is to sorry be stripped of one's 240 पे स्ट्रीम ambition. चल रही है। अच्छा। Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught.
Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? अभी थोड़ा ठीक चलेगा, मैंने बिटरेट कम कर Can दिया। one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady I'm not sure I understand. The path of the sword master is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest sword master in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. That's where had your When that dinner. ambition disappeared, You had he your began dinner. to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're अरे right मेरी आवाज to ही नहीं आ रही assume क्या? that my Hello? feelings towards you are far from kindly. Did you But had I your didn't dinner? come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you कर रहे हो स्ट्रीम देख in the सकते hopes हैं। that they अच्छा, might carry you further. सॉरी, माफ करो, माफ Now I करो। know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you तो asked them what भाई they think? स्टोरी ने जो हालत Sensei, खराब करी है भाई, इस After स्टोरी you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will क्यों माफ suffer करो? in my future अरे as मुझे you नहीं do पता ना, now. टाइप All करवाया I तुमसे know खाते खाते। is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, it तुम is स्ट्रीम time for पीछे you to देख रहे हो, release पता है? yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But I understand. I'm sorry to have made you worry for me. मैं खाना and for the खाते state खाते of कभी Meikyo कभी Shisui तो art. अपने प्रोजेक्ट भी बनाती हूँ। अच्छा, I मैं no भी अपना longer have खाना the खाते खाते resolve to पता नहीं become the यूट्यूब पे best कुछ in the तो एडिट world. कर लेता हूँ। The emptiness and suffering मुझे कोई inside दिक्कत of नहीं me होती, will मैं not भी ऐसे ही abate, करता हूँ। so I cannot hope to still my mind and be free of agitation.
But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Traveler, so the wind that blew for us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you. Ooh, Lady Ya, she seems super mysterious. स्किप करो, बट ये भी तो है कि स्टोरी के बिना समझ में भी नहीं आएगा ना, दिक्कत ये है ना सारी, स्टोरी के बिना समझ भी तो नहीं पाओगे। इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज क्यों रखनी थी, सीधा सिंपल सिंपल छोटा छोटा रखते हुए कुंडिच मार। स्टोरीज के बिना गेम समझ ही नहीं आएगा, गेम ही ऐसा बना है तो फिर कंटिन्यू बोर हो रहा है यार। इंग्लिश एंड अरे इंग्लिश फिर भी ठीक है, पर इसमें कुछ ज्यादा ही एडवांस ब्रिटिश के इंग्लिश भाई, यहीं से गए थे वापस के भाई, अब इससे बकचोदी भाई, इरिटेशन होने लग गया भाई मेरे को इस गेम से अब। नॉर्मल इंग्लिश तो फिर भी समझ आती है, इतनी एडवांस इंग्लिश कर दी है ना, इतनी साला, एक तो समझ नहीं आता, ऊपर से इतनी लंबी लंबी। Guess who fulfilled all your wishes? आयाका नहीं है वहां पर, पहलो खेला, मूड फ्रेश हो जाएगा। और ये आयाका हस्बैंड की आयाका आते हुए ऑल ड्यूड क्यूट तो है। Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Yeah, short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Cute, yes. Because now that you have done the three things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Was it a friend or what? Alright, we can be friends. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent.
All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? You will? Really? Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you she wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your जब favorite बात meeting ही spot? करनी थी तो वहीं This बात is कर land लेते that ना was यहाँ gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. लॉजिक है इस गेम The का Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it. Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. बराबर असलियत But as पता I कहा है recall, तुमने there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Of course, we have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything.
It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt decree. Ooh, Paimon has a question though. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who भाई Don't बस करो भाई underestimate the बस talents करो of the बस craft. करो The problem we Darn! Yes. We know exactly. I feel this when you are ready. हद है बहन एक छोटी सी स्पीच के लिए पूरी ऐसी तैसी करवा ली इन्होंने भाई क्या भाई इसके क्वेश्चन खत्म हुए तो पाइमोन के चालू हो गए अबे भाई एक छोटी सी विजन वो हो रही है विजन चोरी हो रहा है खत्म करो ना ब्रो पता लग गया विजन चोरी हो रहा है बस इतना क्यों बोलना है इतना क्यों बकना है बहन जो बंदे अभी 3 बंदे मिले थे उनका विजन चोरी होगा इनकी वजह से उसको वो हो रहा है दैट्स इट खत्म नहीं ये लो वो लो ये लो अब भाई 4 लोगों से तो बात कराती है इस गेम ने अभी तक Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst! Hey, wait! Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. अभी है कौन है यार What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh. If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. कैमरा ऐसे क्यों दिखा रहे हैं Right. भाई गेम भाई क्या है ये Take it. Wise choice. All right, let's go. कहाँ का कैमरा कहाँ दिखा रहा है पागल हाइपर कल नो जेंसन स्ट्रीम दिमाग खराब कर दिया भाई Do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen एक तो वैलो इसलिए नहीं खेलता उसमें खेलने वाले बंदे भी नहीं है ना साथ में अकेले खेलने में बोर होता है रैंडम बहुत बोरिंग आते हैं इसी रीजन से मैंने Many बीजीएमआई thanks, भी Miss बंद करा है Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. बीजीएमआई भी तो इसी रीजन से बंद करा उसमें भी कोई खेलने वाला नहीं है बहुत बोर करता है रैंडम जो आता है ना अबे Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on... Think nothing. Oh, right. Practically everyone in Hanami-san. Whoa. Stop. As for thanking me, GTA स्टार्ट कर दो his handiwork GTA Yes, Master. में भी मजा नहीं आएगा Huh?
you जीटी guys में go in मजा जब too? आएगा तब सर्वर में खेलोगे तुम, और सर्वर सारे बेकार है, ठीक है? फिर आरपी खेलनी पड़ेगी। Say, then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a आरपी के लिए तो plan. मैं सर्वर चाहिए, अच्छा Awesome. वो भी I've been लेगसी thinking about सर्वर में breaking him बंदे out नहीं है too खेलने वाले, recently. सारे चूतिए भरे पड़े, और But if बीएलटी I just सर्वर में smirk तो मैं straight एंटर ही in नहीं there by करूँगा। myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, Yeah, sir, I'm back. Welcome Me to back. the Welcome team. back. Seems like I finally got डेढ़ in. साल भी So, बचे। Master Masakatsu is being नहीं held नहीं, at the आरपी में police भी station. बोरिंग I've लगता already है, Whoa. वो है ही बोरिंग। Not bad, huh? बट Time to break जिस सर्वर में मैं खेलता था उसमें तो और बोरिंग है साला। एक तो इधर जाओ उससे बात करो, उधर जाओ उससे बात करो, उधर जाओ उससे बात करो। आधे घंटे, पिछले चार घंटे से यही चल रहा है। एक मिशन नहीं करा मैंने जब तक। हेलो एमपी हो क्या तुम? नहीं एमपी तो चला गया। एमपी आता है चला जाता है, रुकता नहीं जाता। फाइनली कुछ तो स्टार्ट हुआ। एमपी नहीं है तो शर अच्छा गया। वो आता है, रुकता है, थोड़ी देर बात करता है, फिर चला जाता है, ज्यादा देर नहीं रुकता। अरे वो खेलना क्या, गेटिंग ओवर इट। Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long I certainly wouldn't want. We should. अरे चलते चलते भी इन्हें बकचोदी पेल ली है। Dodge this! No, my sword. I must withdraw. हाँ खेलो ना, वो अजीब सा इरिटेटिंग गेम, मजा आएगा। इरिटेटिंग हो जाओगे गेटिंग ओवर इट में, बहुत नहीं होऊंगा मैं। अरे बहन का भाई। Leave it all to me. Witness the power of Gugwa. This moment will be frozen in time. Don't hold back. Watch your step. Show me what you've got. मैं तो शो कर दूंगा, तू क्यों इधर से उधर हिल रहा है? तो फिर देख लो, ट्राई करो। हाँ करता हूँ, कल करूँगा। मैं पर उस दिन ट्राई करना जिस दिन बॉस पर गुस्सा आ रहा हो। लॉल। Who goes there? अरे बहन, कैरेक्टर स्विच नहीं हो रहा। चौक 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 लगा, चौक लगा। I've lost.
तुम्हें क्या लगा तुम Wall जीतोगे? looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. You must withdraw. Good time. Brace yourself. Teach me a lesson. No, my sword! Allow me. Don't get frostbite. Strike first. Don't hold back. I dare you. Watch your step. Soldiers, Can't win fucking bro. Can't fucking win with me. don't Okay, hold back. bye. Good night. You cannot match my bravery. Draw. Good night. Okay. Good night. Thanks for joining. Take this. Dodge this. Watch your step. I dare you. I must leave no stone unturned. Soldiers, quick! Cool it! Allow me. Strike first! Don't hold back! Show me what you've got! Watch your step. This. Bastard. बहुत ज़्यादा म्यूजिक है. Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? Can't climb. Teach me a lesson. Witness the power of Gurwa. Steady as stone, as a dutiful maid would. This moment will be frozen in time. I dare you! Don't hold back! Allow me to strike first! Free! Show me what you've got! Rain outlines your Watch fate. your step! Allow me to strike first! Leave it all to me. I dare No, you. my sword! I must step. Withdraw. Show me what you've got! Don't hold back! Show me what you've got! Flash! Let me weave you a verse. Cool it! I need to allow things to strike first! Bastard!
Feel my sword! Freeze! What's the hurry? Don't get frostbite. I must leave no stone unturned. हाँ जी। What's the hurry? How can I go there? Yeah, fuck. अब होगा बवाल। Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. Make way, let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryou Commission itself. Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Oh, Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided to. Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks Well, fireworks are my craft after— Look, the coast is clear! Now's our chance! Yoimiya,
But you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on! We've got no time to lose! They could be back any minute! Oh. Yes. Leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... you can bet we'll do all we can to keep that from happening. Leave this place. ये भी हो गया। Phew. We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Nice, Can GG। you hold on? अबे ये तो Don't इजी worry, फाइट थी, I think I आगे can देख make it अभी to the बवाल infirmary होगा। without keeling मेन over. विलन बहुत बीटी Thank देगी। you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once उसका this is भाई all एक over. इलेक्ट्रो गॉड है, वो Don't समझ worry रही है, about us. समझ रहा है। Just take care of Master Masakatsu. Good thing we were able to rescue him. Right, Kujasara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. अच्छा Paimon भाई would never गुंड agree with their लगेंगे उसको actions मार in the देना। Vision Hunt Decree, of course. How about we go tell Ayaka and the others the good news? हाँ जी, अब तो लॉक्ड है। हाँ, स्पेस नहीं लेगा। कितना किसने मुझे याद किया, चेंज नहीं किया नाम, कर रहा हूँ। यूक्यूओपी एमपी बीजीएम में ऑनलाइन था, मैंने देखा था। आराम ही है ये, चलता चूतिया बताता नहीं है।
अबे चैनल में दो तरीके के चैनल लिखते हैं साला, एक तो दिक्कत ही है। अबे इससे ज्यादा आता नहीं है, फाक चैनल होता है। अबे एक चैनल ऐसे भी लिखते हैं, एली करके भी लिखता है, कोई दिक्कत ही है ना। इससे आगे क्यों नहीं लिख सकता मैं? रंगल तो खेला ही नहीं, करियर रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजो, क्या फर्क पड़ता। हाँ कर दे। एक टीडीएम खेला बराबर। अभी ठीक है। अभी भेजा रिक्वेस्ट, आराम करो, यूट्यूब पे आओ सीधा। सामने तनीषा नाम की लड़की आई थी, उसको बहुत मारा। तभी तो मारा, लड़का होता तो पीट के आता तो। I didn't know you were such a slacker. टपाटप। What's the hurry? Ooh, you restaurant? That place isn't even worth mentioning. भाई कैथरीन से बात करे, गलती हो गई। Why do explorers make the same? अरे ये कमीशन क्यों नहीं दे रही बेचारी? क्राउड जीगल दे रही थी। Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. मैंने आज एक मैच खेला, सही सीजन का पहला 6 किल किया, नाइस। I am sorry, but you have not yet completed enough commissions. मैंने कमीशन ही पूरे नहीं करे अपने पास। Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. या क्वेस्ट ही चेंज कर दिया इसने। अबे ये यार मिशन चेंज कर दिया, यहाँ का कोई मिशन था। सबको याद ही नहीं कौन सा मिशन। पाक तो ये, हाँ ये चल रहा था, नाइस। What's the hurry? यार स्ट्रीम पीछे करके देख लेता हूँ। Special yakitori for sale. Come and try some. हाँ
फिर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा, मेरा दिल बड़ा है। I see. So Kujo Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out और some उसने रिजेक्ट information. किया, Unlikely. as usual. Don't forget, Kujo Sara is also carrying out the Vision Hunt decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected blessing. We are now one step closer to victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. Don't mention it. Indeed. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. Guys, But if we likes wish to नहीं mount हुई। any sizable resistance against the Vision Hunt decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts. And the number of samurai out enforcing the Vision Hunt decree पता seems नहीं। to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? I don't know. Being in a Toma, I'd say, funny. A hot pot? Simply put, then we take it into anyone who guesses. Don't you think it's so? You really do? Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time. Ooh, this is already. Oh, my stomach! It feels like Yoimiya's fireworks are going off inside me. Who would have guessed that Toma would be the winner? He ate Salt crust. Hold up. But weren't you the boiling cake? I must have. Uh-oh. भाई एक इंटेंस मोमेंट चल रही है इस गेम की, ठीक है? You know, Toma, वहाँ all you had to विजन do was स्टोरी guess हो रहा है। wrong on purpose and हम it एक would have been someone else's turn. प्रिजनर को Talk about चुरा being के लाए हैं अभी, और यहाँ क्या चल रहा है? खाने की कंपटीशन। क्या लॉजिक है इस गेम का? क्या भाई, कुछ भी लॉजिक कौन है? Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the God of Hot Pot's blessing. Perhaps I did get a little. I think my luck is. So without further. Yes. पानी पूरी And with the कंपटीशन extra. देख Let's लेना। all take some much downtime is. I'll tidy things up. एक इम्पोर्टेंट चीज चल रही है, why उसमें not? इतनी बकचोदी पेल रहा है। अबे मर जाएगा वो, खत्म हो जाएंगे वहाँ के इंसान। काम करो। कुछ भी गेम में कल मेरे को कमी वो करप्शन दिखा रहे सिटी में कितना करप्शन। अबे मैं क्या करूं करप्शन का? मैं भैंचुस इलेक्शन लड़ने थोड़ी आया यहाँ पे। Where do we go from here? What's the plan? Traveler, Paimon, hold on. Huh? Fudge. Ayaka? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. चलिए भी ठीक है। It is my own individual request. Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. This may seem a little sudden, but in my view, you are the only person I can entrust this to. मैं मना A करेगा। few days ago, I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things, mostly of little consequence. But what drew my attention was a name. It is one that I have never heard before, so the fact that she mentions it so frequently, it makes it difficult for me to ignore. Probably your mom's
you, right? Never. And although my mother and father passed away many years ago, both my brother and I are familiar with the vast majority of their acquaintances. So, I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to meet them. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been someone very important to my mother. Someone with a lot of personality, who liked to have fun. Paimon thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. So what do you want us to do? Do you need us to find her for you? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of greeting gifts. अबे क्या है Please ये keep everything गेम? I've told you in strict confidence. अबे ये मेरे को नहीं खेलना भाई, क्या चूत। उसको अपने मम्मी का किसी से भी मिलना है, डायरी में लिखा हुआ है, तो हम क्यों उसके लिए ग्रीटिंग्स ऐड करें, कलेक्ट करें? यही काम रह गया है, हीरो है हम। गेम है भाई, किसने बनाई है इसकी स्टोरी भाई? The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. Exactly. That, and you are all— You can count. Wonderful. Oh, we don't mind. We don't mind at all. Thank you kindly. All right, sounds good. नहीं भाई, किस चूतिए ने गांजा फूक के इस गेम की स्टोरी लिखी है, मुझे जानना है। किस चूतिए ने जो गांजा फूका होगा ना भाई, पता नहीं। और ये मोड की माँ बहन चोरी, गेम इतना अच्छा है, ग्राफिक्स अच्छे, स्टोरी में ऐसी तैसी करवा दिया है। That Table Venom, hello bhai. Hello bro, welcome to the stream bhai. What is up? Chal chal. Do commissions. I'll do later. फिलहाल तो ये स्टोरी दिमाग खराब कर रही है मेरे इस गेम की। Guys, make sure to hit that like and subscribe button if you haven't yet. Hey, speaking कर of, दो यार like and we haven't subscribe been भाई। anywhere fun since we arrived in Inazuma. Can we reach 510 subscriber? what made you think that? 510 subscriber today. Okay, good night. Festivals are Okay, a Tushar common bhai, occurrence thanks for here in joining. Inazuma. Good night. Each season brings its own fest, so... यार Oh, मेरा मिशन के चक्कर में ये बहनचोद पता नहीं क्या साइड मिशन के बीच में साइड में मिशंस डाले हुए हैं भाई। ठीक है, Welcome. I have all the latest styles. Please ये take a चीज look. स्किप कर सकते थे, पता है?
किमोनो खरीद रहे, ठीक है, स्किप करो ना ये चीज। Great. Oh, Let me कैसे खरीदते see. हैं, कितने रुपया का है, बार्गेनिंग करो, ये करो, क्यों डाला हुआ है भाई गेम में? Oh, Miss Kamisato. Please, if you could. I'm honored that So based boring on the life. design, as you, well, in all honesty, but of course. so you're saying... If even Ogre. You could try the only thing is that. Huh. So even just... Wait! The international... Thank you कमीशन से ever so प्रीमोजेम्स much. मिलते हैं, पता है, आई नो, मैं आफ्टर इस In the meantime, I इसके have बाद one कर of. रहा हूँ। Why is she being so... Much obliged. My pleasure, Miss. Honestly, I'm अभी just as excited चार as वो you to खरी see the मैंने, end उसमें एक product. मेरे को हो We up to haven't made a 60 silk kimono बस। for the. Traveler Paimon? वहाँ से दूसरी जगह से भेज देते हैं, फिर बात करने। This is it. The International Trade Association. Okay then, we need to talk to Kurisu, right? Huh, doesn't look like he's here. Let's look around. मोबाइल गेम्स खेलते हो? हाँ, आई एम एक्चुअली बीजीएमआई प्लेयर लास्ट 4 years। सारे गेम्स खेलता हूँ मैं, मोबाइल में, पीसी में, जो भी हो। चेक द सिचुएशन नियर बाय। Bro, what the fuck is going on? Cool it! Pokemon Unite नहीं, पहले खेला है बहुत, बट मन नहीं करता। मतलब पहले बहुत नहीं खेला है। Look, there he is. अब बहुत खेला है। What am I gonna do? Mr. Kurisu, are you alright? Oh! You're Miss Ayaka from the Kamisato clan. How do you do? Better than you, it appears. And if it isn't the Traveler, I haven't seen you in a while. I take it you've been out of Rito? Thanks again for your help last time. The association is back in business, इसी and पर it's और all कौन सी thanks to गेम you. खेलते हो? Valorant, That's great, but Story Games, Control, Long Dark, did something bad happen? GTA पहले खेलता था, अब I नहीं see. खेलता क्योंकि लैपटॉप लैग करता है मेरा। लैपटॉप इतना कैपेबल नहीं है It's कि GTA embarrassing to admit, but some of the association's goods have been stolen by vagrants. Which goods were stolen? It was a batch of high-grade silk. Aw. We imported a big batch of silk from Liyue several years ago. It's been sitting in storage ever since. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our batch out of storage, thinking it'd probably fetch a good price. But then... the vagrants swiped the whole batch, then disappeared into the woods. I'd report it to the authorities, but... well, as you know, they don't think much of foreign merchants like us. The Kanjo Commission don't want to give us the time of day. Honestly, you can just tell that our suffering amuses them. Well, I also take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational methods.
Please remember, आपने Mr. इसके Kurisu, गेम के सारे that मिशन while कर you are लिए क्या? here in Inazuma, गेंशिन के? you should be careful with your words. Oh, my apologies. I had to let off some steam. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to get our goods back. Perhaps I'm doomed to go bankrupt after all. I am afraid I can't intervene in an official नहीं नहीं, capacity, but I can still help you कितना get your यार है lost आपका? goods back. Of course, I would never. Wait, what? Huh? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, there is no escaping the fact that my every action and word will be seen to reflect बड़े on the भाई, Yashiro अच्छा, Commission and the Kamisato clan. I do so not without reservation, so I hope that you will treat this matter as ज़्यादा नहीं खेलता confidential. स्टोरी में, That aside, करता मैं। अरे as यार I'm sure बहुत you're बोर कर रहा aware, है, मतलब I'm इन्होंने afraid जो that I मेन won't कैरेक्टर always की be able स्टोरी to रखी है help ना, you in उसके such अलावा पता नहीं साइड circumstances. से क्यों स्टोरी जोड़ Given रखी your है। position and that of the International Trade अभी ये देखो, Association, please try इसका to सिल्क विल exercise का more क्या caution सीन in है, the अब उसमें मेरे को future. हेल्प करनी। अबे मेरे You को do मेरी not want to स्टोरी करने incur दो ना, further साइड unnecessary की स्टोरी क्यों losses. जोड़ रहे हो? इसको अपनी मम्मी के किसी दोस्त से मिलना था, मेरे को उसके लिए सामान कलेक्ट करो। अबे भाई क्या मजाक है? इस सिटी में आया, यहाँ के करप्शन देखो। भाई ठीक है भाई, यही तो करने आया हूँ मैं गेम में। मेरे को मेन स्टोरी रखो और स्टोरी से कंप्लीट कराओ अपनी, जो भी है। विलन से लड़ना है या क्या करना है, अपने भाई को ढूंढना है, वो साइड में स्टोरी क्यों जोड़नी है इतनी सारी, वो भी बोरिंग बोरिंग नॉन स्किपेबल स्टोरी। We इरिटेटिंग will. भाई। We certainly will. But, are you sure this isn't gonna cause any issue? What if someone... Very भाई humorous. बोर कर रहा है भाई बे। Let's not forget. Whoa, Mr. Kurisu. Thank you so much. फिर दोबारा। Everyone, please follow me to the scene of the crime. All right. इरिटेट कर रहा है बे। अबे मेन स्टोरी को मेन स्टोरी पे रखो ना, साइड की स्टोरी ऑप्शनल रखो कि बंदा अगर करना चाहता है, उसको जरूरत है तो वो करे, ठीक है, ताकि उसको उससे मटेरियल्स मिल सके या जो भी आपका पैसे है, जो भी गेम का अपडेट के लिए वो है, वो सब करे, ठीक है। Here we बट are. नहीं, This is where we were robbed. Hey, look on the ground. What are those? Huh? Footprints. Very deep ones at that. Leading towards the forest. Presumably, the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. क्या फुटप्रिंट है। Stop, thief! You think you can get your stuff back with this bunch? You must be dreaming. Why you better... Why wouldn't अब trade इनसे आके बकचोदी, सीधा बात मारो, खत्म करो। You are despicable. Hey! ये Business देख लो, pay up. इतनी लंबी बात विलन से। Wait, Mr. Kurisu. But... I trust you remember. Oh, yes, of course. Then please stand. Let's get Ray down to business. outlines your face. Dodge this! To the ferry. To the ferry. Want a taste of my hammer? Lucky day. और भी हो क्या तुम No, पहुंचेंगे? my sword! No more. My blade. Boom. Ring cutter! Steady as stone. Time to clean up. Cool it. Finally, hide the ferry. पाइप यूज करो, That's resolved then. जरूरत ही नहीं है। मेरे जो नॉर्मल कैरेक्टर है, मैं उनसे मार देता हूँ उनको।
No, please, It was nothing. I was simply doing my duty. Miss Kamisato, traveler, are you hurt? Don't worry. The Bro, vagrants left in quite a hurry. मैं चाइल्ड को they पेल didn't के have आया हूँ, time to take अभ्यास को anything 3 with बार them. कुत्ता बना चुका I हूँ, believe ठीक your है? stolen goods should all be here. स्टॉर्म टेरर को Thank you. Thank you so स्टॉर्म टेरर much. को मैंने ठीक करा। I'd best do a count. उसके बाद ओसाइल को मैंने 6, मारा। 8, 10. Yep, it's all here. उसके हस्बैंड को मैंने मारा और ये मेरे से पूछ रहे कि आई एम हर्ट। वाह, Now we can finally buy some silk. स्टोरी का हीरो Buy किसे silk? बनाया भाई? ठीक है You भाई। mean you need some of the silk here? This was indeed our intent. Don't get us wrong, though. That's not the reason we helped you out. Even if it were just a few carrots or cabbages, chances are we still would have helped you get them back. Paimon thinks we're pretty lucky. If we arrived any later, our chances of getting silk in Inazuma would have been 0. हीरो I की औकात honestly तो can't इन्होंने thank you मिट्टी all में मिला enough. रखी। Please, say no more. You need silk? I'll pick out a piece for you right away. अब ये सिल्क ले जाओ उसके पास किमोनो बनाने वाले के पास, वो किमोनो बना के देगी, फिर ये अपने Oh, गिफ्ट it's दे के free of जाएगी मम्मी। charge. I could never ask you to pay after everything you've done for me. No, that will never do. Things merchants अरे already भाई have enough सिल्क there's लेना है, इसको nothing to इतनी feel बकचोदी distressed पहननी है, about. बताओ। Because nothing. Thank you. I'm. Very well. भाई हो गया मेरा ये गेम नहीं खेलना, बहुत हो गया भाई। Traveler, thank Wow. you for stepping in. But Perhaps. I admit that it did feel. I guess that deep down. Sorry, I'm getting off topic. Right. okay. अब पता था उसके पास जाओ वो किमोनो बनाएगी। अरे ब्रो, एक्सपीरियंस हो गया है जो इतने देर में तो। विशुद्ध चूतिया स्टोरी है इस गेम की। नहीं कर रहा हूँ मैं, आटा बेंचो कल करूँगा, इससे अच्छा तो अपने कमीशन करो एंड जी। एक तो इसको भेंचो फूल ला के दो। अरे है गेम कमीशंस करने देना, मेरे को यहाँ क्यों ला रहा है? दिस गेम इज सक्स ब्रो। Rain outlines your fate. Leave it all to me. Oh, so sorry. What's the hurry?
Freeze! Huh? Cool it! Ha! Freeze! सामान उठाना है जो वहां पर चोरी फेर रहा है। स्टैचू ऑफ सेवन को अपग्रेड किया क्या? हाँ कर रखा है। सारे जितने भी मिलते हैं करते रहता हूँ। बस करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्या सीन क्या हो रहा है? इसलिए ब्रो, सबसे मुश्किल क्वेस्ट कौन सा लगा? तक तो सारे ही मुश्किल तो नहीं, चूतिया लगे। ये देख लो, इधर इधर उधर उधर घूमते रहो। बूम बूम। हाँ भाई सच में ये चूतिया से वेंचर स्टोरीज डाल रखी है खामा खा की। अच्छे लड़ने आया मेरे को। No, my sword! Cool it! Steady us. Time to fulfill my duty. It isn't time for a break yet. Let me weave you a verse. Breaking a sweat. Don't get frostbite. I slipped up. No slacking off. This is bad. Freeze! Bro, nah. My work finished. No, my sword! खोपड़े के अंदर भरेगा तो। These things useful? हल्की सी ठंड लग रही है ना। उफ।
Ayash. This is so fucking annoying. सारा उसको तो बात या तो दे ही देते। तो वो कर दिया और ये होए ना। और बच्चे 4 की जगह 5 कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा जोड़ के उसमें। Ring cutter. I must leave no. Cool it. Dodge this! Cool it! Hmm. This mob will be frozen in time.
Dodge this! Cool it! हो गया कंप्लीट। बंद करते हैं। Ad Astra. Thank you for Ad Astra Abyssos. जी जी। चलो भाई किसी के साथ बंद करते हैं। मेरे पास कुछ हो सकता है आज आइटम भी। क्या है इसको क्या करना है? मैं Take your pick. You'll find no second-rate items at Wagner's. और
विश मिल जाती तो ओके जी जी चलो बंद करते हैं भाई बहुत हो गया बाय विल मीट यू टुमारो इवनिंग तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर स्टे सेफ एंड गुड नाइट आदियोस